Good morning, Suraj Singh. Today, 30 March, 30th March 2020, 30 जनवरी 30 मार्च 2020, एक और दिन कोरोना का। कोरोना, एनिमी ऑफ वर्ल्ड एंड टीचर ऑफ वर्ल्ड, वार्डर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया को चेतावनी देने वाला, दुनिया का दुश्मन कोरोना। भगवान क्या चाहता है, what God wants, we don't know. After all, nothing can be done without permission of God. So I think this is punishment time by God. God is punishing everyone. I was going through one news yesterday, एक समाचार रिसर्च का, अनुसंधान का। बहुत सारी कंट्रीज के रिसर्चर्स, अमेरिका के, इंग्लैंड के, दूसरे कर रहे हैं रिसर्च, अनुसंधान कर रहे हैं, गोइंग थ्रू ऑल दिस व्हाट्स हैपनिंग। उन्होंने कहा कि आज से नहीं, बहुत पहले से, हो सकता है कई दशकों पहले से ये शुरू हो चुका है, जिसको आज हम समझ रहे हैं। एक्चुअली जिसको आज हम समझ रहे हैं वो बहुत पहले से शुरू हो चुका था, हल्का हल्का। बड़े अजीब सी रिसर्च आई है, मैं नहीं, वैज्ञानिक कर रहे हैं, वैज्ञानिक, डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं कि ये तो पहले से है, 15 साल, 20 साल, 30 साल, कोई नहीं जानता कब से शुरू हुआ था, आज बढ़ गया, पावरफुल हो गया। दिस वायरस had been generated long back, was generated long back, but we did not know about its existence. Now it has been intensified, it has become old, and so it is impacting all us. How it happened, still they are not sure. There are assumptions, there are directions, suggestions, indications that this works between animals to humans. Such direction is there, that this virus transfers from animals to humans through kids, through children. This is summary of that research. Means it's still unknown, they are working, but they are telling us that it has got a relation between living animals to humans. This is what scientists say. I'm not saying. This means there is a lot more to work on this experimental research or discovery to know facts. If it starts from animals, they have tested chemicals of camels, tested chemical of other animals, and they have got some information that what people are thinking, it's not that one, it's not correct. In fact, still it's unknown, but some information that comes in is very different. Means it was there before, in light volume, light intensity, maybe in 50s, in 60s, in 70s, nobody knows. We did not notice it because in those days people were strong, citizens of world were strong, they used to work hard. पहले सब मेहनत करा करते थे, ज़्यादातर लोग दुनिया के सब मेहनत करते थे, फिजिकल मेहनत, मेंटल मेहनत तो करते ही थे, तो अब भी करते हैं। अब फ़र्क इतना है कि फिज़िकली ज़्यादा मेहनत नहीं करते, एंड बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट वर्किंग फिज़िकली एंड रिड्यूस्ड, everybody has reduced its immunity power of body. So I think there is effect of this one. Our resistance of bodies are reduced. We never get energy from nature for our bodies, and that's what a factor which allows this epidemic or this pandemic to attack us. I think this has some weight. You remember those farmers, those workers, decades back used to go to plowing fields, crops in sun, early morning, bearing all weather conditions. Those were very resistant people. They developed their resistance from 0 to final maximum value, and they could resist it.
But now we are all royals. We don't have resistance, and in particular, youth, kids, and those who have money do not have such power of resistance in body. We cannot bear sunlight, sun heat. We cannot bear frost. We cannot walk, and we want to do everything that gives comfort, physical comfort to ourselves. हम वो सब काम करना चाहते हैं जो हमें सुख दे, शारीरिक सुख दे, आराम से रहने को दे। हम मेहनत सन में नहीं खड़े हो सकते करने के लिए, हम चल नहीं सकते, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है जो हमारे शरीर को मजबूत बनाए। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कह रहा हूँ। हम सारी दुनिया के लोग कमज़ोर बन चुके हैं। If you see people of Europe, people of America, they all eat cold. They take, because weather there is cold and they prefer cold except tea. If you see American, they all, and English people all, they want to take cold. Because of what reason? I do not understand. In our country, Bharat, India, all weather conditions exist and we are prone to those. This means if we change our conduct, if we change our living style, still there is a chance that we can make ourselves, हम अपने जीवन के बदल दें, अपने सुखों को बदल दें, थोड़ा सा नेचर के साथ चलें, गर्मी भी सह लें, और दिन में खड़े हों अगर धूप में उसको भी सह लें, थोड़ा चल भी लें, थोड़ा शरीर को और मजबूत बना लें, तो शायद ये चीज़ ना हो। पहले था, लोग चलते भी थे, पढ़ाई भी करते थे, खेती भी करते थे, मेहनत भी करते थे। आज भी देख लीजिए, जो गरीब आदमी है, जो चल रहा है, चाहे वो कुछ भी चल रहा हो, उसके अंदर एक शक्ति तो है सोचने की कि मैं चल सकता हूँ। क्या मेरे जैसे लोगों में या आप जैसे लोगों में शक्ति है जो अपने आप को मिडिल क्लास का कहते हैं या अपने आप को पैसे वाला मानते हैं? यहाँ नहीं, सब जगह नहीं चल सकते, धूप में नहीं खड़े हो सकते। हमको तो एसी में रहना है और हमको हीटर में रहना है। हम वो सब नहीं कर सकते जिससे शरीर की शक्ति को बढ़ाया जाए। और मैं समझता हूँ जो भी कीटाणु आएगा, जो भी वायरस आएगा, शरीर में ही तो आएगा, पैर के नीचे तो आएगा नहीं, शरीर के अंदर जाएगा तो पनपेगा। और वो वायरस का रेजिडेंस होता है जहाँ कंफर्ट उसको मिलता है। तो हमारा शरीर कमज़ोर है, ये कह सकते हैं आप, ज़्यादातर लोगों का, जो मेहनत नहीं करते, आराम का चाहिए। पैदल मैं क्यों चलूं? मैं नहीं चलना चाहता, मेरे पास पैसा है, मेरा बच्चा पैदल क्यों जाएगा? कार में जाएगा और कार में ही आएगा, बस में जाएगा, बस में आएगा। मेहनत करूँ मैं क्यों करूँ? मेरे पास पैसा है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। आई हैव गॉट मनी, आई एम रिच पर्सन, I can buy comforts for my kids and for myself, then why should I work like that? This is a big question and big answer. If you do not work hard, do not walk, do not think that you can make your body, gymnasium shall not help you, because natural process is a natural and real, and gym exercise is not natural. Sun gives you chemicals, sun gives you many chemicals, and vitamin D is one of them. You are missing vitamin D, you are missing argon, you are missing nitrogen and oxygen because you are not walking in air. You are in your car in air condition, so you do not understand what is air, and when you come out of your car, you are walking as if you are in very dirty environment. You forget even if environment is dirty and your body is used to that, at least
You have some resistance. That resistance we don't have. वो हमारे शरीर के अंदर शक्ति सहने की नहीं है जो होनी चाहिए. मान लीजिए वायरस पहले से था, हल्का था, बहुत हल्का था, और आज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया, और जो उसका पालने वाला है, जिसके शरीर में ये जाता है, वो पालता है इसको, चाहे कुछ दिन के लिए ही सही. टाइम बता देगा किसकी गलती है किसकी नहीं है. मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता. जो आज की तारीख अगर आप देखें, आज भी उस समय के हिसाब से जब इन्फ्लुएंजा आया था 1918 में, और बहुत चीज़ें आई थी, बहुत बीमारियां आई थी. पढ़ रहा था मैं कल एक न्यूज़, सऊदीया के बारे में लिखा था, अरब के बारे में लिखा था. वहाँ बहुत बार आया, कोई बीमारी आई और कितने मिलियंस लोगों को लेके गई. अगर उस टाइम मिलियंस मरे, लाखों करोड़ों उस टाइम मरे दुनिया में 1918 में, उससे पहले, इसका मतलब है आज अभी हम बहुत सेफ हैं, बहुत सेफ हैं. Still we are too safe. We have not lost millions and millions yet. I do not forecast for future, but currently you cannot say what happened that time is happening now, because of various reasons, because of treatments and so many other factors. People are aware, communication accessed, and information is disseminated. Due to that factor, still it's not very bad. Yes, of course, it's bad in some areas where we never expected bad. For example, Western countries, European countries, they have been exposed that there's a cover up on their development, complete cover up on their development. What we understand about them and what they boast about them, that is not evidenced here. वो जो बोलते हैं यूरोप वाले लोग, अमेरिका वाले लोग, कि हम पता नहीं क्या हैं, हमको फॉलो कीजिए, हम दुनिया को चेंज कर सकते हैं, आज की तारीख में ऐसा नहीं है. मतलब ये कि उन्होंने एक फेस पे कवर लगाया हुआ था, असली फेस पे, और वो आज सामने आ गया. अमेरिका हो, इटली हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, कहीं ना कहीं सब के सब झूठे हैं और थे. वो भी उसी हाल में हैं जिसमें बाकी देश हैं. अभी हम बचे हैं, उसके बहुत से कारण हैं. हम इसलिए नहीं बचे कि ये यहाँ नहीं आएगा. हम असल में बच जाते पूरी तरह से अगर हमारे पैसे वाले लोग ज़्यादा दिखावा ना करते. भारत के वो लोग जो अपने आप को गरीबों से बहुत दूर रखते हैं. मैं अमेरिका की बात इसलिए कर रहा था कि आज की स्थिति में, आज की तारीख में अमेरिका इस केस में, कोरोना के केस में नंबर 1 बन चुका है. रात को देखा मैंने समाचार में 1,25,000 लोगों को हो चुका है. 1,25,000 लोग और 2,500 के आसपास वो कह रहे हैं मर चुके हैं. Already 125,000 people have been affected in US and 2,500 tolls have been reported till now. This is official figure. I don't say why it is, but if you see 125,000 people have been affected, and if we take on average 10%, this means around 10,000 people to 12,000 people must have been gone, have been, must have been somewhere. They must have faced death, but it's not coming out. No problem, doesn't matter. And Italy has crossed to 12, 13, 14, 15%. So my statement says that facts are not coming out, and the speed of America is rapidly moving, and I think it may reach approximately 5 lakhs cases in America itself, what I expect. Reason is there. It's not because America is poor or America cannot afford. America is a rich country financially. It gives facilities to its people. But problem is temperature. Temperature in America, temperature in England, and temperature in Europe, and temperature in, you can say, Iran, Gulf,
There is variation of temperatures. If you see temperature of our country, Bharat, and China, and Philippines, and Thailand, and Malaysia, and all that, Japan, there is a variation. And because of that variation, habits of people keep on varying. What nature says, if it's hot, you should take little cold, and it's very cold, you should take little hot. But this doesn't happen in these countries. Americans particularly consume cold water, cold food, everything they take cold, as well as many European countries too. If you take cold, you will not sweat. If you don't walk, you will not sweat. आप ठंडा पिएंगे तो आपको पसीना नहीं आएगा, आपका हाजमा भी ठीक नहीं रहेगा, जम जाएगा अंदर जाके। इसी तरह से अगर आप चलेंगे नहीं, पसीना नहीं आएगा, तो वो टॉक्सिन्स तो आपकी बॉडी में जमेंगे ही। और अगर ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में इकट्ठी हो जाएंगी, टॉक्सिन्स हो, पसीना हो, कुछ भी हो, तो आप जानते हैं क्या होता है, बॉडी के अंदर कचरा बन जाएगा सब। और वो कचरा है, वो आपको शक्ति नहीं देगा, आपकी जो शरीर की थोड़ी बहुत शक्ति है उसको भी ख़त्म कर देगा। और शायद यही हो रहा है। अगर हम अभी भी देखें अपने देश का हाल, गल्फ़ का हाल बहुत कम है। पूरा गल्फ़ देख लीजिए, इतना नहीं है, नाम मात्र को है। आप हमारा देख लीजिए, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस वजह से नहीं बढ़ रहे कि हम खराब हैं या हम कमज़ोर हैं। वी आर नॉट getting these tolls up because we are weak. It's because we are having impurities from overseas. Impurities in form of those who are working outside or who travel outside. They came back and they are agents, they are carriers of this disease, of this virus, and they actually incorporated themselves, or they supported a spread of this virus in our country. I am clearly and plainly speaking without any you can say hesitation, that poor and those who stay in this country, who reside here, do not visit overseas countries. They are responsible. They are responsible. They are not responsible for this disease only those who are upper middle class and riches, who feels that there is a status, who think they are status people while having world tours or moving here to there, this country to that country, and feel pride in that, take pride in that. Those people are actually responsible for this virus, and our country did not keep this in mind when they reached the home. They never took care and they released them. They allowed them move in, and this has spread. Our hard workers are our poor people. Our middle class, lower middle class, of course, to some extent is hard work. So we cannot say that we cannot digest it. And that's, I think, only one reason that tally is not that high in our country. Cases are not that many. But it would be now. Reason is that we are not proper country. We do not plan properly. We do not think properly, and we lose everything. हमारे देश ऐसा है जो ना कभी किसी बात की सही प्लानिंग में विश्वास करता है, ना सही किसी बात की केयर करता है। और जो लोग लेकर आए इस बीमारी को बाहर से, जो भी लोग थे, सब जो गरीब तो नहीं थे, मजदूर तो नहीं थे, वो आए और इस खतरनाक मेहमान को अपने साथ लाए, और ये मेहमान यहाँ फैल रहा है क्योंकि उस मेहमान की गलती, उस मेहमान की गर्दन हमारे प्रबंधकारियों ने, हमारे सरकारी कर्मचारियों ने और हमारी सरकार ने एयरपोर्ट्स पर काटी नहीं। यहाँ वो गलती कर गए। शायद एक्सपीरियंस नहीं था, या कोई और डर था, या कोई और रीज़न था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन ये सच है कि हम फेल हुए हैं। अमेरिका फेल हो, इंग्लैंड फेल हो, उससे इस बात का कोई वो नहीं है, लेकिन हम फेल हों ये बात तो पिंच होगी। जबकि हमारा तापमान सही है, हमारी जीने की कंडीशन सही है, हम लोग मेहनती हैं,
फिर ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमारा गवर्नमेंट, हमारा प्रबंधन सही नहीं काम कर रहा है। इस बात में कहने में कोई हिचक मुझे नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऐसा हो रहा है। बुराई नहीं करने चाहते हम किसी की, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं होता, तो कहना तो पड़ता है। अगर गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि टायर ठीक है, गाड़ी चल लेगी। टायर पंक्चर हुआ है तो हुआ है, हो सकता है तो हमारे भी टायर पंक्चर हुए हैं, इसलिए हम सही तरह से नहीं चला पाए अपनी गाड़ी। हम क्या होता है, हम सोचते नहीं हैं। चाहे हम सरकार में हों या सरकार के बाहर हों, हमारी सोचने की शक्ति जीरो है, बल्कि माइनस है। वी आर नॉट थिंकिंग पीपल, वी नेवर completely think, we never calculate what shall be aftermaths of our actions, and we just take actions without any reason, without any explanations, and when we take action, we expect you have to follow that, and that's it. And when question of comes, that's it, it doesn't work. Just think, we locked down. Order was given 3 hours before lockdown time, 3.5 hours, whatever it is. You think at night 3 hours is adequate time? It is a plenty of time you can manage. Okay, you are a rich person, maybe you have some cash in your home, you have food in your home, or you have resources to get it. You have some house, you have car, you can go, you have telephone, you can call trader and you collect material, that's okay. But you think a person who is so poor, he just earns, that person earns only 200 rupees, 300 rupees, 400 rupees maximum, and that person is at work at that time. When you announce coming from work to reach home, and you announce at 12 o'clock you cannot go out, you think that person shall manage? Can you manage in that case? Maybe you are rich. Until you have some source, some special source, you cannot manage yourself. But you expect that worker, that poorest sectional person, lowest profile person, who is not very well educated but skilled one, that person to manage in those 3 hours when that person does not reach home, to manage everything for home, to arrange everything for home. And you are saying lockdown for 21 days. 21 days lockdown at least should have taken 2 or 3 days for preparation of every citizens. 3 weeks. What this type of planning is? If you are given 2-3 hours and that that time when shops are closed and you don't have money because you are not paid salary and nobody expected that, how shall you buy your items? Is that not a question mark? Why don't you people understand this point? You are simply idealistic speaking, oh, you have to follow it. Yes, we have to follow it. But don't forget, you can follow only when there is something in stomach, where you have food, you have water. Only then you can follow. If your kids don't have milk, don't have water, don't have food, don't have vegetable, you think that's right? Can you go without food more than 2 days, 3 days? Why do you not work at ground level? After all, what is reason behind that? I just order and that's it. That is stupid order. I have just ordered, do it. Why did you decide in such haste? I raise a question to everybody and the government. Was it right? You took 2 days for a test, which you call Janata Curfew, and for a real action. You just allow 2-3 hours to go home and be inside for 3 weeks. You did not allow even 2 days or 3 days.
Is this real work? Is this engineering? Imagination. Just to show yourself that you are so serious. Why were you not serious in February? Why you were not serious in January? Why you are not serious in first week of March? I have a right to raise a question to all citizens. Why we had been sleeping? Why? So why do you blame those poor people who are actually backbone of our country, who are our real power? If those people are not there, I am like English people and like American people, that I shall have to do everything myself and you have to do everything yourself. अगर ये लोग नहीं होंगे, ये वो शक्ति समाज की जो रहती तो सबसे नीचे पायदान पर है, पर काम करती है सबसे ऊंचे डेक पर, ये वो शक्ति है। पढ़ी लिखी ना हो आपके हिसाब से, काम जानती है, आपके हिसाब से डिग्रियां ना हो इनके पास, लेकिन मेहनत जानती है। ये जानती है काम कैसे किया जाता है, धूप कैसे सही जाती है, गर्मी सर्दी कैसे सही जाती है, थकावट कैसे होती है। ये जानते हैं जब भूख लगती है तो सूखी रोटी कैसी होती है। आप जानते हैं? क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते आप, खाली आप मक्खन गिरी लगाना जानते हैं। आप खामाखा किसी की सपोर्ट करना जानते हैं। आप ये नहीं जानते जब पसीना आता है तो कैसा महसूस होता है। आप ये नहीं जानते जब शरीर में दर्द होता है तो कैसा महसूस होता है। अगर ये जानते तो ये उल्टे सीधी बकवास नहीं करते, उनके दर्द को समझते। ये दुनिया का दर्द है, उनको भी है। अगर मुझे रोटी नहीं मिलेगी तो मैं कितने दिन खा लूँगा, कितने दिन रह लूँगा। ये बात समझना जरूरी है। कह देना कि अंदर रह जाओ, किस लिए रह जाओ? 2 दिन का समय दो, 3 दिन का समय दो भाई। इतने दिन से तो आप सो रहे थे, अब आप जाग गए तो अपना ड्रामा कर रहे हो। ये ड्रामा नहीं चलता, याद रख लेना। जरूरत से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन सही नहीं होती, जरूरत से ज़्यादा भी सख्ती सही नहीं होती। ये बात प्रैक्टिकल कह रहा हूँ। आदमी उतना ही सह सकता है जितना उसकी शक्ति होती है, या थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद उसका डर खत्म हो जाता है। आपने डर दिखा दिया उसको, ठीक है, लगाना चाहिए था, हम कब कह रहे नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन दिमाग बंद करके लगाने का मतलब ठीक नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, आपका उत्तरदायी है पब्लिक को सेफ करना। ये हम मानते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टांगे काट दो, उनके हाथ काट दो, पुलिस को इतनी शक्ति दे दो कि पुलिस उनके सर फोड़ दे। ये बात मान्य नहीं है। चाहे सो कुछ भी आप बोल दीजिए, ये गलत है। और जो गलत है वो गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आप उस गरीब के बारे में, मेहनत कश के बारे में जरा नहीं सोच सकते, आप सिर्फ बड़े बड़े लोगों के बारे में सोचते हैं और फिर कहते हैं जी सहायता दो। किस बात की सहायता दो? किस लिए सहायता दो? पैसे खाने को नहीं है, कहाँ से देंगे? ठीक है, कुछ लोग पैसे वाले हैं, उनके लिए शायद पैसा रद्दी है, लेकिन क्या मेरे लिए पैसा रद्दी है? आपका सिस्टम था ही नहीं, बस आपने ऑर्डर कर दिया, आदेश दे दिया। यू हैड नो सिस्टम एट ऑल। व्हाट वाज योर प्लान? व्हाट यू वांटेड टू डू दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट actually lockdown has failed. Actually it has failed. It will not be corrected by serials. It shall not be supported by something else. It will be supported exclusively only
and only by common man, common person, common citizen. If common citizen cannot digest it, it fails. It has happened, we know, and it is happening. You may state anything, we will do this and we will do that, no problem. People don't care. You did not instruct police properly, adequately, rightly, what action they should take, and police has decided itself to beat people. Is that right law and order situation? You think so? What is police? To help people or to kill people or beat people? I don't understand police now in 2020 what they are. They are killers or they are protectors? I don't know. Maybe only Prime Minister knows or ministers knows. Ministers are watching Ramayana. For them it is Ramayana watching time. Shame on to these ministers. Sitting in home, they should be on roads to help people. They should be somewhere else to help people, but they are enjoying. They are enjoying. People are celebrating. Is it celebrating time? Is it time for entertainment? Really, I don't understand. It is time to think, to contemplate how to let this enemy virus go. But I am enjoying. People are worshipping at home. Okay, worship. Worship, no problem. But let those people who have problems solve it. Let them solve it themselves if you cannot solve it. It was your duty, your first-hand duty to solve it. But you did not solve it and you did not even think to solve it. That is a lapse on your part. I am not blaming you as government. I am blaming you as a human being. Do you have certain degree of human angle in your mind and conscience? And if you had that, then you should have taken that into consideration while placing this order and allowed them 2 or 3 days so that they could digest it properly. You just hammered their heads and they broke actually. They broke. Sometimes information is not clearly given, explanation is not given, so people remain confused. Just like people do not know what is this corona, how they should behave with this, how should they handle this. They have no such idea and they are not telling. And even not our country, all countries are not the same. I saw a video from Bahrain that Bahrain police with some translators go to all homes and tell everybody do like this and don't do like this. That is the way you have to disseminate information to all, but you did not do that. Your televisions do not know anything. They do not know anything. Wash hands for 20 seconds, many times a day. They are not telling from where you get water in slums area. What shall you do in slums area? How shall you provide that? They do not know. They do not know about that. So what should you do then? You may say I am talking against government. No, I am not talking against government. I am talking against system. System is broken. There are 60 ministers in government and there are 29 or 30 governments in our country. So many chief ministers, so many ministers with them, and thousands of MLAs in our country, and then crores of workers. What are all they doing? Did they go to these people who violated this order? Did they talk to them? Was it not your duty to talk to them? Okay, you did not talk to those people for CAA revolution, but here is no revolution. This is question of food.
food question. This is question of living. Many of them were living without any room. Many of them were living on footpaths, in hutments. There was no honor for that. They were there for food, for work. And those who were having rented accommodations, same applies to them. You are just ordering. We ask owners not to charge them rent. Is it your property? You made that property. You can issue order for government property or for private properties. Why did you not think to use your government buildings to accommodate these homeless? And you said 125 crore houses have been built. Where are those houses? Where are those houses which Modi claimed? This means it was lie. I have given 125 keys, 125 crore keys. Means this was fictitious announcement. If that was condition, why are these millions people out? I have a right to this question. मैं तो अधिकार यूज करूंगा बोलने का. ये सवाल देश का है, ये सवाल देश के गरीब का है और गरीब के लिए बोलना मेरा हक है. मैं अमीर के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि अमीर को तो बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती, उसकी तो शक्ल देख के उसको सहायता मिल जाती है. मैं तो उसके लिए बोलूँगा जो मैं खुद हूँ. ठीक है, मैं पढ़ गया, थोड़ा आगे निकल गया, लेकिन हूँ तो मैं सबसे नीचे दर्जे का. मैं उस क्लास का हूँ जो सबसे नीचे होती है, और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उस क्लास से हूँ जिसमें मानवता होती है. मैं उस क्लास से हूँ, मैं उस क्लास से नहीं हूँ जिसमें दानवता होती है. आज ये लोग दानव हैं, दानव. हमारे ये पैसे वाले, ये हमारे नेतागण जो अपने को नेता मानते हैं, और वो पैसे वाली अपर क्लास, हाई क्लास. ठीक है, आप दे रहे होंगे प्रधानमंत्री फंड में, देते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है. कौन सा उन्होंने खर्चना है देश की जनता पे. पहले भी खाया, अब भी खा जाएंगे. इसलिए जनता वहाँ देना भी नहीं चाहती. सच तो ये है, विश्वास से देश चलता है. जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं. याद रख लेना, अगर घर के अंदर सदस्य में विश्वास नहीं होता तो वह घुट टूटता ही टूटता है. लोग तो आज 90% लोग, 80% लोग सरकार को मानते ही नहीं. विश्वास तो दूर की बात है. कुछ लोग हैं सरफिरे, जिनके दिमाग बांधे गए हैं, उनको तो समझ ही नहीं आएगा, और मेरी बात उनके लिए है भी नहीं, और वह चाहता भी नहीं मेरी बात सुने या मेरी राइटिंग वो पढ़ें, क्योंकि मैं उनसे बहस भी नहीं करना चाहता. बहस तो उससे की जाती है जो आपकी बात को समझ सकता हो. जानवर से आप क्या बहस करेंगे, भैंस से, गाय से आप क्या बहस करेंगे, कुत्ते बिल्ले से आप क्या बहस करेंगे. तो मैं उन लोगों से बात भी नहीं करना चाहता, और मैं चाहता हूँ वो मेरी बात सुने भी नहीं. क्या फ़ायदा वो सुन भी लेंगे तो. दिमाग तो उनमें है नहीं, बात समझते वो है नहीं, तो बहस क्या करेंगे. गाली देने के सिवाय. उन लोगों से मेरी प्रार्थना है, मेरी ना पोस्टिंग पढ़ें, ना मेरी बात को सुने. मैं ये बात आपके लिए कर भी नहीं रहा, मैं तो उन गरीब लोगों के कर रहा हूँ जो संघर्ष कर रहे हैं. कुछ लोग आराम से घर में बैठे हैं, घर में बैठ के उनकी ड्यूटी पूरी हो जाती है, बस काम खत्म. उनको कुछ लेना देना नहीं बात से. हमारे देश का कोई मंत्री रामायण देखने में बिजी है, कोई ताश खेलने में बिजी है, कोई मटर छीलने में बिजी है, और कोई अंताक्षरी खेलने में बिजी है. कितने अच्छे, कितने हाई प्रोफाइल हमारे देश के मंत्री हैं. देखिए, भारत महान है, यहाँ मंत्री अंताक्षरी कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं जीवन का. बहुत बड़ा काम है. देश चल रहा है, लोग मर रहे हैं, दुनिया में आग लगी है, और ये लोग मस्ती मार रहे हैं. कितनी अच्छी बात है. इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है. शर्म तो उसको आएगी जिसमें आत्मा होगी. जब आत्माएं निकल जाती हैं शरीर से तो क्या बचता है. आत्मा है ही नहीं इनमें. सीट का नशा इतना ज़्यादा होता है कि आदमी की आत्मा को भी खत्म कर देता है. दुर्योधन बन चुके हैं सब.
और वो जो दुर्योधन के पिता थे धृतराष्ट्र बन चुके हैं सब। उनको अपने जीवन की तो चिंता है, औरों के जीवन की चिंता उन्हें नहीं है। यही प्रॉब्लम है हमारे देश की, औरों की चिंता उसको नहीं है। और ये बड़ी दुख की बात है कि हम ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जिनको सिर्फ अपने से मतलब है, किसी और से मतलब नहीं है। अपने से उनको मतलब बस। क्या करेंगे ऐसे लोगों का? क्या वो हमारा फ्यूचर फैसला कर सकते हैं? हु इज दिस ब्लडी फूल? क्या वो हमारी बात को समझ सकते हैं? हमारे साथ रह सकते हैं ऐसे लोग? हमें क्या समझना चाहिए? शुड वी नॉट कंडेम सच पीपल? व्हाई शुड वी सपोर्ट सच पीपल? दीज स्टूपिड पीपल ऑफ दिस कंट्री। क्यों चिंता करें हम उनकी? कौन है? बात कर, घंटे में आते बात की। हु इज दिस ब्लडी फूल? इडियट्स, शेमफुल पीपल। बार बार जाए जा रहे हैं अननेसेसरली। शर्म नहीं आती गधे लोग। मत जाइए फ्रंट में, निकल जाइए आप फ्रंट से। इडियट्स। क्या है? हाँ, क्या है? क्या बात है भाई? हेलो, क्या क्या है? उल्लू के पट्टे कौन है? तेरी ऐसे की थे साला बदमाश, कमीना लोग, बदतमीज आदमी। बदतमीजी की हद होती है। कहां से पैदा हुए देश को बर्बाद करने के लिए? दिस टाइम इज डिफरेंट। वी हैव टू थिंक। सोचना पड़ेगा। बताइए, कुत्ते हैं साले, मानते नहीं हैं। गुस्सा आता है। मैं बात कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, एक कमीना फिर आ गया। ओ कुत्ते, ओ डोंकी, कौन है ये? ओ कमीने, कौन है? सामने आ। ब्लडी फूल, आके तंग कर रहा है। देखो ना, सिर्फ तंग कर रहा है। कोई मतलब नहीं है बात का, तंग कर रहा है बीच में। कोई मतलब है? कुछ लोगों की आदत है, देखो खामा का डिस्टर्ब किया जा रहा है, बिना बात डिस्टर्ब कर रहा है, बिना बात डिस्टर्ब कर रहा है, और करे जा रहा है, मानता नहीं है। क्या करेंगे ऐसे लोगों का? मतलब उसको आप सुने ना, इसलिए डिस्टर्ब कर जा रहा है, वो मानेगा नहीं। देखो करे जा रहा है, करे जा रहा है। कोई जरूर मोदी भक्त है, नहीं तो ऐसे नहीं करता। मोदी भक्त है कोई ना कोई। सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो ये डिस्टर्ब करेंगे। यही इनकी आदत है। देखो मानेगा नहीं, डिस्टर्ब कर जाएगा। क्या कहेंगे इनको आप? ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। ये देखिए, नहीं मानता, नहीं मानता वो। कुत्ते की औलाद है। ऐसे ही होते हैं कुत्ते। और किन्हें कुत्ते कहते हैं हम? किसी को काम भी नहीं करने देंगे। ऐसे बदतमीज करोड़ों लोग देश में हैं। उनकी सुनवाई नहीं करेंगे, गलत काम करके दिखाएंगे सामने आपके। ये हाल है देश का। क्या करेंगे आप बताइए? ऐसे लोग मोदी भक्त हैं। देश दुनिया जल रही है, इनको अपनी मस्ती है, अपनी मस्ती में है ये। इन्हें कोई मतलब नहीं देश से। खैर, ये तो करते रहेंगे, इनकी मैं वैल्यू नहीं देता। अनफॉर्चुनेटली बीच में तंग कर रहे हैं, मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूं। हमें वी हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग नाउ, एंड आई एम विद एवरी पुअर ऑफ दिस कंट्री। आई एम नॉट विद दोज हु आर रिच, हु आर हैविंग मनी। आई एम विद दिस पुअर पीपल. They announced that they will put them in 14 days quarantine. Okay, put them. That is procedure. And I am with every procedure that protects citizens of this country. But at least they should reach where they are. But government has ordered they will not be allowed to move. That is really unfortunate. They have given orders to all states that seal states and don't allow these people to enter another state. This is really unfortunate. Means this government is not considering citizens as human beings. This is really unfortunate. Really unfortunate. These people are not considering these people human beings. And that's really nonsense. It is really nonsense. If government thinks these are not human beings, they help them nothing. Neither Delhi government helped
not central government help, and state governments never help, and they are putting restrictions on them every day. And what shall happen? What shall be the result? If somebody has to move 500 kilometers, 600 kilometers with family, naturally, it won't be successful. Won't be. Now some buses were arranged by UP government, some buses, maybe 1,000, I don't know. This was why I was saying that. So that's not solution. That's not solution. When lakhs of people are on road, लाखों लोग जब सड़कों पे हैं, तो आप नहीं कह सकते कि आपकी 1000 बसें या जितने भी आप लगा रहे हैं वो काम करेगी। ये आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। क्या आपके पास बसों की कमी है? क्या दिल्ली ने बसें नहीं भेज सकती थी? लेकिन नहीं, किसी ने ध्यान दिया। और इसलिए हम बोलेंगे, अगर ऐसी कोई बात आएगी, क्योंकि अगर हम उनकी जगह होते, आप सोचिए तो क्या सोचते। अगर मैं भी उन्हीं में से होता, मैं भी एक कहीं कमाने वाला होता हर रोज़ इन गरीबों के साथ, तो मेरे साथ भी तो यही होता या नहीं होता। ठीक है, हम थोड़े ऊपर उठ गए, इसका मतलब ये तो नहीं वहाँ नहीं थे, हम भी तो ऐसे हो सकते थे। वो फैक्ट्री के ऑनर बंद कर दिया काम, निकाल दिया जॉब से इनको, कहाँ जाएंगे अब ये? खाना नहीं है, रोटी नहीं है, बच्चे साथ में हैं, अकेले हों तो भी चल जाता है। भाई हमारे फैमिली हमारे गांव में है, जैसे हम बाहर जाते हैं तो होता है, दूसरी कंट्री में काम करने जाते हैं तो यही होता है, फैमिली हमारे साथ नहीं होती, ज़्यादातर लोगों की, ज़्यादातर वर्कर्स की बच्चे साथ नहीं होते, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम भी आए तो आदमी सह लेता है, चलो रोटी तो मिल ही रही है ना, कुछ कमा तो रही है। लेकिन यहाँ तो वो बात भी नहीं है। आपकी फैमिली भी साथ में है, उन्हें पता तो नहीं था कि ऐसा समय भी आ जाएगा कि हमको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और हमको चलना पड़ेगा पैदल। कौन चाहेगा अपनी बीबी को या अपने बच्चों को या छोटे छोटे बच्चों को सड़क पे लेके जाएगा? कौन चाहेगा? कोई पागल भी नहीं चाहेगा। ये तो लोग काम करने वाले हैं, मेहनत से खाने वाले हैं। सिर्फ हमारे भारत की सरकार की ये बात समझ नहीं आ रही, अनफॉर्चुनेटली उनके भक्तों को ये बात समझ नहीं आ रही कि वो एक इंसान है, मानव है, मशीन नहीं है। ये आप कुछ भी आइडियलिस्टिक बात कर दीजिए, घर में बैठिए, वहीं बैठिए जहाँ थे, वो बैठे थे, वो बैठे थे, आपने उन्हें बैठने नहीं दिया, आपने उनको खाने का अरेंज नहीं किया, आपने उनको रोटी का अरेंज नहीं किया, आपने उनके घर जाके देखा भी नहीं, कोई गया नहीं, आपका वर्कर भी जाके देखा नहीं कि ये जी रहे हैं या मर रहे हैं। किसको खुशी होती है सड़क पे जाने की? शौक है क्या? मुझे तो शौक नहीं है ऐसे 800 किलोमीटर चलने का। आपको शौक है मोदी भक्तों? और सरकार वाले मोदी आपको शौक है? और मिनिस्टर जो रामायण देख रहे हैं आपको शौक है? हर्षवर्धन आपको शौक है? किसको शौक है? आप तो कार से भी नीचे नहीं उतरते हैं, और ये लोग सड़क पे आ गए, उनको शौक है। आप कह रहे हैं पिकनिक मनाएंगे, आपके एक आपका खास आदमी कहता है ये तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं। यही तो है नशा, पावर का नशा, इसे ही कहते हैं घमंड। जब आदमी कुर्सी पे बैठ जाता है ना, उसको शायद नीचे दिखाई नहीं देता। अगर यही हाल ब्रह्मा का हो जाए, यही हाल शिवा का हो जाए, यही विष्णु का हो जाए, या माताओं का हो जाए, भगवानों की माताओं का, तो पता नहीं, तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। लेकिन वो तो देखते हैं, सब देखते हैं, उनका तो सिस्टम रुकता नहीं। सृष्टि का सिस्टम तो चलता है, वो तो नहीं रुकते। वो तो ध्यान देते हैं आपकी फसल पे भी, ध्यान देते हैं हवा पे भी, ध्यान देते हैं आपकी सांसों पे भी, तभी तो आप जिंदा है। नहीं तो वो भी भूल जाएं बटन दबाना तो आपकी तो सांस रुक जाएगी। जब वो कर सकते हैं जो जिससे आगे कोई नहीं हो सकता, आपकी औकात क्या है? मेरी औकात क्या है? लेकिन नहीं, हमारी सुनो, नहीं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और ये यहाँ नहीं, मानवता की बात कर रहा हूँ। हम तो हैं ही जो हैं, बाकी में भी यही है। सारी सरकारें फेल हैं, लेकिन पेनल्टियाँ लगाई जा रही हैं। फ्रांस वाला भी पेनल्टी लगाने को तैयार है, इटली पेनल्टी लगाने को, खुद फेल हैं। देखिए, होता है ना, जब आप फेल होते हैं
आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपके पास एक ही हथियार होता है, लोगों को मारो, पेनल्टी से मारो या पुलिस के डंडों से मारो। क्योंकि जिस आदमी के पास सॉल्यूशन नहीं है वो अपनी हेकड़ी ही दिखाएगा, रिबाउंस ही करेगा ताकि कोई बोले नहीं मेरे सामने। अरे मरना तो है सबको, आप बचा लेंगे क्या जब मौत आएगी तो, लेकिन आप पहले मानव तो बनिए। अपनी जिद से आप क्या पालेंगे? और आप सीट पे आ गए तो इसका मतलब ये नहीं आप मालिक बन गए सबके। क्या कर रहे हैं आप? जब भूख होती है, जब पेट की आग होती है तो ना सोनिया काम आएगी ना मोदी काम आएगा, रोटी ही काम आएगी भूख मिटाने के लिए। किसी की बातें काम नहीं आएंगी, याद रख लेना। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, इट्स ट्रुथ ऑफ लाइफ। नो वन शैल बी यूजफुल व्हेन यू आर हंग्री। योर पोएम्स, योर सॉन्ग्स, your dialogues shall not quench your thirst, shall not fill your stomach with bread, wet with rice. Your own system shall break. No one will help you, only food will help you. This is a fact. You may be rich, you may be poor. आप तो रिच हैं, आप तो अरेंज कर लेंगे, आपका क्या? मुझे तो अपनी चिंता है, मैं गरीब आदमी, मेरे जैसे करोड़ गरीब, मैं भी इसी लेवल का हूँ, तो मुझे समझ आता है कि गरीब की समस्या क्या है। लेकिन आपको समझ नहीं आता, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ पुअर, बिकॉज यू आर नेवर पुअर। यू आर शोइंग योर सेल्फ पुअर बट यू आर नॉट पुअर। इफ आई अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रगल, I know who is struggling. If I understand what is problem, I can solve it. And if I do not understand root of that problem, I can never find solution. And that is what is happening. These people who are in power, they do not understand what is problem of citizen. They do not understand. That's why they say do it. That's it. Do it is not an answer. Solve it is answer. Solve it. First it is your duty to solve it. Then ask others to solve it. What did you solve since this problem started? You have to answer that. Now you have to answer that. Because problem is now, not after 10 months. You did not understand problem. You just placed an order. Go home and that's it. Go home without food. Food I will send to you. It means that, did you send food? When you place such order, it's understood that you will arrange every requirement of life. Otherwise, you have no right to place such order to be in action. Why did you not take that into your consideration? It's my question on behalf of citizens of this country, except bhakts of this country. My question to government is, when you place this order, did you bring into your consideration that this can happen? If you did not understand that, this means you are not a real leader. If you cannot understand problems of the people and problems that can scale up in such a situation, every person having small mind can understand this. But our people, no, they cannot. You promised that we will provide food. Where is that food? Just statements? Only statements. We will do this and we will do that. That is in future. Now I need food. Where is that? I was on footpath. I need some shelter, even in tents. Where is that? Remember, this is not 500 people issue. This is not 1 million people issue. This is issue related to crores and crores and crores of people, poor people. Whose duty is that? Did you not anticipate that this is going to happen? आपकी समझ में नहीं आया था?
कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। आपको चिंता टेलीविज़न सीरियल्स की है, घर में बैठिए सीरियल देखिए। अरे किसी के पास घर होगा तो घर में बैठेगा और सीरियल भी तभी देखेगा जब खाना होगा। खाने को नहीं रोटी, पीने को नहीं पानी, दवाई साथ में नहीं, और आप कह रहे हैं एंजॉय करो। कैसे चलेगा? करिए, आप एंजॉय करिए, आपके पास सब कुछ है मिनिस्टरों, आपके पास तो पब्लिक फंड से सब कुछ है, आप तो एंजॉय कर ही रहे हैं। लेकिन क्या आपका हक बनता है एंजॉय करने का? मेरा प्रश्न ये, अगर करोड़ों लोग भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, आप कह रहे हैं एंजॉय करो। कैसे? कैसे? आप सबको गुलाम बना के रखना चाहते हैं? कैसे? गुलाम भी बनाएंगे तो गुलाम नहीं बनेंगे, भूखे भी गुलाम नहीं बन सकते। इसलिए सरकार कार्यविहीन हो चुकी है, सोच विहीन हो चुकी है। सरकार की सोचने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। जैसा ट्रंप के साथ है वैसा ही मोदी के साथ है, जैसा फ्रांस वाले के साथ है वैसा इटली वाले के साथ है। सबके साथ एक ही है, सोचने की शक्ति खत्म। क्योंकि प्रॉब्लम समझ नहीं आई, और जब समस्या समझ नहीं आई तो हल भी नहीं निकलेगा। जब हल नहीं निकलेगा तो परेशानी तो आएगी ही, और हल निकालने के लिए दिमाग को शांत रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। 5 मिनट का सोचना सॉल्यूशन दे सकता है, खाली बोलने से नहीं, भाषण देने से नहीं, गुरुओं की तरह इस बातें करने से नहीं। प्रवचन कहते हैं, प्रवचन देने से नहीं होता। वचन तो कोई भी दे देगा, प्रवचन कोई भी दे देगा। इसमें क्या है? 2-2 पैसे के बाबा ये भी देते, इनको पता कुछ नहीं होता, 8वीं पास नहीं होते, दुनिया को सिखाते जीना कैसे है। तो हमें उन लोगों से प्रवचन नहीं चाहिए। हमें प्रवचन उन लोगों से चाहिए जो मेरी भूख मिटा दे, जो मुझे रोटी खाने दे, मुझे आने जाने के लिए कुछ तो दे। अगर आप कुछ नहीं दे सकते थे तो आपने किस अधिकार से ये फैसला किया था? अमेरिका ने सब जगह अभी तक नहीं किया, डर गया ट्रंप, फैसला लेते लेते वापस कर दिया फैसला, नहीं मैं सील नहीं करूंगा। वहां के गवर्नर कहते हैं जब तक हम लोगों को रोटी नहीं दे सकते हमें हक नहीं है ये कहने का कि जाइए घर में बंद हो जाइए। सिस्टम का दिमाग है उसमें, क्योंकि वो सोचते भी हैं, पूरा ना सोचें कुछ तो सोचते हैं। यहाँ तो कुछ सोचने की असल में वायरस है, कोरोना तो बाद में आया है, यहाँ सोचने का वायरस पहले, हम सोचते नहीं, यही वायरस है। कोरोना कभी नहीं आता अगर हम सोचते। अगर हमारी सरकार जागती समय में, जब ये शुरू हुई थी प्रॉब्लम, तभी से हम सोचते तो शायद ये नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ ये शुरू नहीं हुआ, ये लाया गया है। बड़े बड़े पैसे वाले, अरबों खरबोपति, करोड़ोंपति, जो हवाई जहाज से नीचे उतरने में शान उल्टी समझते हैं। यार आज मैंने फ़्लाइट नहीं ली, लंच तो मैंने भारत में लिया था, मेरे को डिनर तो इटली में लेना था या सिंगापुर में लेना था। उनकी स्टैंडर्ड नहीं मिल रहे। आज दुख इस बात का उन हो रहा है, और आ गए यहाँ, बीमारी ले आए अपने साथ। कितने गरीब लोगों की वजह से बीमारी आ रही है, कोई बता तो दे। कितने गरीब लोग, मजदूर लोग की वजह से ये बीमारी लग रही है। अब वो गरीबों को लग गई तो अलग बात है, तब तो लग जाएगी, लेकिन कितने गरीब उसके कैरियर हैं, मुझे कोई बता तो दे। कौन कैरियर है गरीब का? बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े दूसरे लोग कैरियर हैं। वो इस गंध को लाए हैं और डाल दी गरीबों पे। अपने घर में तो 3-3 महीने का सामान खाने का रख लिया। उन्हें पता है 3 महीना चल सकता है, इसलिए उन्होंने रख लिया। और पैसा है, पैसा। जो आटा 25-30 रुपए का मिलता है वो 50 रुपए का हो गया। और आप कहते हैं घर में रहिए। कहाँ से रहेंगे? क्या खाएंगे? खाएंगे क्या? क्या खाएंगे हम, कोई बताएगा? What shall they eat?
कोई जवाब नहीं सरकार के पास, बस एक और ऑर्डर, एक और ऑर्डर, इतना ही होता है। क्या करें ऐसे लोगों का, आप बताइए। हाउ कैन वी हैंडल सच माइंड्स ऑफ गवर्नमेंट हु नेवर थिंक फॉर पीपल, only think for themselves, what to have done. Such people we have to lead us, unfortunately. And see this stupid man, many times he has called this, I don't know, this man who's this, Saddam Midya, let me talk to what she wants to say. Hello? Why are you disturbing? Huh? Hello? Hey fool, stupid. Why are you disturbing? You don't have talking to people? Stupid guy. Nonsense. Bloody fool, get lost. Idiot people. Let him bark. Let him bring down. What I am saying, I am not criticizing anybody, but I have to speak when people are in problem, and I am also in problem. Say, I am used to walk every day, is my habit. I used to walk 6 kilometers every day because of gastric problem. I am patient of gas formation in my body. If I don't walk, it reaches even my head. So that is a treatment for me to walk so that I release my gas. But I am not able to walk now. So I am suffering from something also. At least 6 times, 5 times a week I must walk, but I cannot walk now. I must take some, when I walk I receive sun rays also, which is a need of my body. I get vitamin D and my joints of body open because of heat of sun. But I am not getting that. So I am also suffering physically. Everybody is suffering. I am not against that. We have to sacrifice also. I know that. But food is a must, remember. Maybe you can sleep on footpath, you can sleep anywhere, you can sleep in tent also. But there is no alternative to food. रोटी के बिना कोई नहीं रह सकता, पानी के बिना कोई नहीं रह सकता, ये भी एक सच्चाई है। अगर रोटी नहीं है आपके पास तो कपड़े की कोई वैल्यू नहीं है, कितने भी अच्छे कपड़े आपने पहने हो। घर के बिना आदमी किराए पे भी रह सकता है, फुटपाथ पे भी अपनी झुग्गी बना के या कहीं और अपनी झुग्गी बना के रह सकता है। लेकिन रोटी के बिना तो आप कितना समय रह लेंगे? 1 दिन, 2 दिन? चलो आप तो 1 दिन 2 दिन रह सकते हैं, आप बड़े हैं। छोटा बच्चा रह सकता है, वो तो अपनी बात बता भी नहीं पाएगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो क्या ये बात बड़े लोगों को समझ नहीं आती? नहीं आती तो क्यों नहीं आती? एक मैं बात तो जरूर करूँगा क्योंकि मेरा हक है इस बात को करने का, और मैं इस कोरोना के बाद अब थोड़ी देर में समाप्त करूँगा कि मुझे आगे दूसरी बातें भी आप लोगों से कर रही हैं। ये तो रोज़ की बात है और ये क्रिटिकल बात है, मैं इसलिए शुरुआत कोरोना से करता हूँ। आज की तारीख में इससे बड़ी समस्या कोई नहीं है और ये समस्या बढ़ती जा, एक्सपेंडिंग एवरी डे। US is number 1 in corona, 1,25,000 cases till yesterday night, with more than 2,500 deaths. If US cannot solve it, if US cannot solve it, then what are we? Yet we are lucky that we have good weather and still we are safe, but if we do not control that safety factor, it will expand, it will multiply. It will multiply, and it is multiplying now because of, okay, these people have come out on roads, they had no option, it was your duty to solve it, you did not solve it, you are just putting more restrictions on them. Yesterday I saw a video, people are in Kerala, many people are in Kerala, I think from which state, they want to go home, I think Bihar, they have no way, 1,000 people, they are in some place, and they say we did not receive any food
We did not receive any help, and if we are not helped, we are not supported by 31st of this, means by tomorrow morning, by tomorrow, they will start walking. You may put seal, you may put police, but when person is hungry, that person is not fearful of police, not fearful of orders. This place also he has to die, and at that place also that has to die. That person has to die in both locations. So for that person, police is no meaning. Remember, even military is no meaning. I have to die here, I have to die there. No problem. I move. It's the question of marriage. If I am not killed by Ram, I will be killed by Raman. Both ways I have to die. So better go to Ram. That decided, right? Marriage, Aaron. What he decided? This man will kill me, Raman, if I don't listen to. So better go to Ram. At least God will kill me. That was his decision. So it applies here. Either hunger would kill me or police would kill me. So I have to lose my life. Well, I move if I can save myself. This point government is unable to understand. You have trains, 14,000 trains. You have buses. It's not your property. It's public property. Why don't you open them for 3 days for these people? We will put you in quarantine. You are still threatening them. Still आप धमकी दे रहे हैं उनको. हम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर. अरे करना क्वारंटाइन, खाना तो दो इनको. भूखे मारोगे 14 दिन. पर उनको जाने तो दो. आप तो कह रहे बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देना इनको. ए स्टेट बॉर्डर क्रॉस मत करने देना उनको. अभी वो घर में तंग थे, अब आप उन्हें सड़क पे तंग कर दो. मतलब आप अपनी बदतमीजी से बाहर नहीं आने वाले. अब आप सड़क पे उनको जेल बना के रख दो. मतलब आप उनका वेलफेयर नहीं सोच सकते. मत भूलना, उन्हीं लोगों की वजह से आपके एमपीओ को वोट मिले थे, जिनको आप चोट दे रहे हैं आज. वो सोच नहीं सकते, वो भावना में बह चुके हैं. आप भावना में क्यों बह रहे हैं? These are masses of this country. These are not very educated people, but they are workers without whom you cannot survive. And to them, you are treating like animals. Are you shortage of buses? Do you have shortage of buses? Do you have shortage of trains? Who are you to decide like this? Who are you to decide like this? When mass movement happens, it is mass movement that have to decide like this. They ordered you to help us by coming out of their homes. This is a declaration of order. You have to follow order of public government. You are not above public. And you are not masters of public, remember. You have to follow them. You quarantine them or don't quarantine, that is secondary question. Question is, first they must reach to safe locations where you can examine them or quarantine them. Arrange for them everything. This is your duty, because they are affected people. They are aggrieved people, and you are not aggrieved. You are staying in your bungalow. What problem you have? You have food, you have luxury, you have TV, you have every facility. So you are not a problem. You are not facing any problem. Your ministers are enjoying, your officers are enjoying. They don't have any problem. Problem is being faced by these lowest profile of citizens who just earn 200 to 500 days or 600 rupees a day. Their children are affected, their wives are affected, their kids are affected. You are not affected, and you are taunting them. You are breaking law, you are breaking curfew. Of course they will break. When this curfew is not, this is also curfew, stomach. This is big curfew. If my stomach is burning, I will not care for anybody. भूख तो अच्छे अच्छों की नानी याद दिला देती है. सरकार, आप क्या चीज हो? आपका तो पेट फुल है. आप तो कह देंगे मैं तो व्रत कर रहा हूँ नौराते के. आपने उनके भी नौराते करा दिए जबरदस्ती. जो चांद खाना चाहते थे,
जो पीना चाहते थे आपने उनके भी नौराते। बड़ी अजीब सी बात है। मैं क्यों ये बातें कर रहा हूँ आपसे? क्योंकि मुझे दर्द है, इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। आपको दर्द नहीं है, क्योंकि आप इंसान हो ही नहीं। इंसान होते तो ये बातें नहीं करते। आप में इंसानियत नहीं है। इंसानियत होती तो ऐसी बातें नहीं होती। यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग, नॉट ह्यूमन बीइंग, नॉट ह्यूमन बीइंग। यू आर ओनली मिनिस्टर। You are only minister. That's why it's happening. You are only minister, nothing else. Otherwise ऐसा नहीं होता। आप सोचते, समझते और फैसला करते। आप जो फैसला कर रहे हैं, सिवाय उन लोगों के लिए जो कुछ 15-20% लोग हैं, और 80% लोगों को आपने सड़क पे फेंकने को मजबूर कर दिया। और पुलिस तो आपकी हैवानी है, आधी पुलिस तो हैवानियत बन चुकी है। वो तो सोचते हैं इनको मारो, ये कबाड़ा कहाँ से आ गया। उनके लिए तो कबाड़ा है। कोई सड़क पे आ जाए तो कूटो इसको। चाहे कोई बीमार हो, कोई दवाई लेने जा रहा हो, या किसी का पैसा ना हो, एटीएम की तरफ जा रहा हो, आप पूछेंगे नहीं, इसको पहले पीटेंगे। पुलिस तो ऐसी नहीं हो सकती। पुलिस ऐसी हो गई तो फिर क्या रह गया? क्या रह गया फिर? टेल मी। ये यार बहुत बेवकूफ़ इंसान है। कौन है ये बात को अच्छी तरह समझ आना चाहिए। और अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम कुछ नहीं समझेंगे। वी हैव टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड, वी कैनॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। एवरी मिनिस्टर हैज ए राइट, हैज ए ड्यूटी टू लुक इनटू दैट। इफ यू डू नॉट लुक इनटू दैट, you are working as animal, not as minister. This is very clear statement. It is your duty to help public. If you cannot help public, you are working against nation. Must be clear. If you cannot do your job, you are not respected. You shall never be respected. That is what I am making a statement here. Yes, mister, what do you want? Hey, stupid guy, why are you calling me again? You come here, I'll beat you. Bloody fool, idiot, son of an idiot. You don't understand what you are doing? You are dog? Are you donkey? Bastard. Well, no more criticism of anyone. See this bloody fool. What to do with such people? Such idiots are available in our country. I'll take its name out. Let me do after that. Well, gentlemen, I should simply say, if you can help, help these poor people. These need your help, and if you can help, fine. Now I'll come to management issue. अब मैं अपने विषय के बारे में जिसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इशू ऑफ मैनेजमेंट, जो हम कल भी बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं आगे, उसमें कुछ बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। आफ्टर ऑल आखिर ये सब है क्या? बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू। हम बात कर रहे थे कि कैसे ये बनता है, कैसे काम चलता है। शायद ये गरीब लोग ही करते हैं उसको, जिनकी हम बातें कर रहे हैं। हम आपको नहीं करते, ये गरीब ही करते हैं। हाउ वी डू दैट? आई वाज टॉकिंग अबाउट फाउंडेशंस, व्हाट इज़ बिल्डिंग, व्हाट इज़ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स बिल्डिंग। और मैं पहले आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहूँगा बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स। एक्चुअली what is structure, I shall like to show some of my his records, what actually it is all about. So before going to that, I'll give you some photographs here, and that's very important from knowledge viewpoint. Let us say I'll show you some photographs here from projects, which what projects are, what we're talking about, why I'm talking about that. And that's very important point here. So it is there. Here I'm trying to show you some profiles of, let us say, for example, see, you can see I can go. This is a big plant. I'll show many photographs as such. You can see here there is a sea,
See, and this is onshore project. These photographs I have downloaded from Google Earth. Okay, this is a pumping area, and this all this complete plant. I'll show you another one. This is just one, and I'll go to other one. A little close up of that. See, there are so many structures in this. So many structures. It's very big. It's, you say, in 2 kilometers by 2 kilometers area, and this is a process area. Process means it's oil area where oil is processed. Oil which is taken out from sea, समुद्र के नीचे से जो निकाला जाता है उसको बाद में प्रोसेस करते हैं. इसका प्लांट है, और ये बहुत सारे फोटो पहले दिखा रहा हूँ आपको, समझाएंगे बाद में ये क्या है. देखिए उसके कुछ हिस्से अब मैं दिखाऊंगा आपको, कुछ अलग अलग हिस्से. बिल्डिंग्स हैं, कुछ सड़क हैं, कुछ दूसरे कंट्रोल्स हैं इसके. इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको पता लगे जब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर्स की, what for I am talking about. And that's very important. Why I'm talking, which structures I'm talking about. This is an LNG project. LNG gas, natural gas, light natural gas. अगर आप देखें गोल से, this all tanks, LNG tanks. These गोल इसके अंदर बहुत बड़े टैंक्स हैं, छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े टैंक हैं, बहुत ऊंचे और बहुत गोल, और ये इसके प्लांट प्रोसेस के हैं. तो देखिए इसमें 4 टैंक दिख रहे हैं, ये है और 3 ये हैं. ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है ये. और ये सब एरिया सिक्योर होते हैं, लेकिन गूगल पे है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैम. अभी देखिए ये मैं आपको एक बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, छोटी सी बिल्डिंग. हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, लेकिन देखने में छोटी है, बट स्ट्रक्चर होते हैं इसमें. That's why I'm trying to show you, and I was also involved on this sometimes. स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, और कुछ ना कुछ मैं भाई कर चुकी यार. कुछ बिल्डिंग यहाँ, और one administrative building, then there's another building, amenities building, warehouses, and so much there, so many more buildings. Just for you to let you understand what I'm talking about. I'm not talking about rocket science. This is detail of process area. Just like you can say, I say this is a substation building here. This all is process area here. And this is we are gैस पे and this is a fire tower or flare tower. जो waste gases हैं, these are out and these are burnt into air. From this plant the gases is coming out. This is those gases, This is a specific area of that plant, specific area, administration area of that plant. Roads are also shown in that area, and then some other structure is shown, which is a point of exit here, small building point of exit, and plantation and sectors are there, landscape, and this is area of this
I'll show same one. You can see expansion, surroundings of that one. So the piping work and some other works are shown here. Same flare tower here and its lead, its connections to that plant. It's in desert, complete in desert. And you see this key plan of that, it's like a key. Is something, totality of that plant, facility. This is a sea water basin where we put water in. You can see this facility. It's a water container, store water. This bluish color you see, this is basin. And then you can say it's a circuit plan, means chemical circuit, how it works. This is circuit of technical process. So I'll get you more photographs. This is one building. This one building only commercial. This is a different type of press building. This was in Baghdad. So many buildings around. And then you can see this another area I will show you here, which was various buildings are here. This is just another plan of that area. With C is shown here with this plan. In that C was not shown. It's only for that purpose. Another little expanded one. And this is some small electrical building here, substation. Now, I'll show you more structures here because these are very important to actually understand what I'm talking about. If you cannot understand, and then I'll show you some bad works also here, how works are done bad, quality works, which are here being done. See this bad quality work. There's no control, nothing, concrete is there, trench is there, and this is here in our country. There's no control on these works. Very bad quality works. You can see itself. It's very bad quality work. You can see very bad quality work here. No control or anything. See, this is another bad quality work here. My intention is to tell you what type of works we are doing. Then we discuss together. You can see another bad quality work here. See how Publishe.
Can't say that this is real work, it's rubbish work. See what rubbish they plaster on put much of water on that concrete to hide that. I'll show you structures now. Structures, what structure are in small buildings. Let me show you some plans again first. Structural plans I'll show you first. Better one, See plans before I show to you. Again I'm trying to show you what type of works involved in our field. How we do, what is involved, just for your information. Complicated work or drawings. You can see this complicated work here. You may not even understand what it is, but it is work. It is a drawing. Maybe you are looking surprisingly, wow, so much work is done on this, but it is done no other way. All behind scenes, behind work, behind construction. Maybe it's beyond your imagination. Structure work is what? What is the structure? This is structure work I'm showing you. All this is structure work. It's a rubbish storage of steel. Rubbish. How people spoil steel. You see, these are very good bars, but they spoil it by storing, by moisture. See another piece of this system. How they misuse steel. So I'll try to just show you. I'll take you another picture, and that's what I'm talking of. I'll show you. I'll try to show you something which is really okay. Let me go back just a minute. Yeah, I'll show you some real constructed area. You can see this. This is a house, built up house. And actually I want to tell you what is the structure. You see, this is a beam here, big beam. And this is a window and slab. Another beam here, the columns and beams. Part of structure, you can see that coming down. Where one TV is there on both sides, there is column, this column, beam, this column. This is structure
I'll try to show you another picture also, the slab and structure, and that you can see that one, this is structural work. You can see stair, you can see this is stair, there's beam below, there's no column below but support, and all those other photo, you can see what structure is about. And you can see this slab and beams. For example, this roof slab, these beams and roof. I'm trying to show you beams, slabs, and columns. Big beam and column and slabs. Because there's a fan is seen, and there's a beam, big beam, and columns. These are all structures. So I try to show you this because it's important to know. That's I showed to you. I'll talk about structure. ढांचा कहना चाहिए, स्ट्रक्चर मैं कह जा रहा हूँ, आप ढांचा समझ लीजिए इसको. ढांचा क्या है? वो ढांचा जिसकी हम बात कर रहे हैं. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि रफ स्केच बनाया हुआ, हैंडमेड स्केच, रफ स्केच. अभी एक रफ स्केच बनाया है. देयर इज अ स्लैब एंड columns and 2 or 3 stories, and they are shown foundation. This is only for reference. इसमें जो whatever is slab there, columns and beams and foundation, ये सब ढांचा है. We call it a structure, building का ढांचा. और ये जानना जरूरी. देखिए इसमें हमने लिखा है फ्रेम, क्योंकि जहाँ सारे कॉलम एक लाइन पे कनेक्ट होते हैं वो फ्रेम होता है. फ्रेम पूरा का पूरा. और ये वर्टिकल कॉलम्स पूरे नहीं दिखाए हैं, इंडिकेटिवली दिखाए हैं समझने के लिए. इसमें पूरा बनाने में बहुत टाइम लगता है. और ये है सेंटर बिल्डिंग का दिखाया मैंने. यहाँ पे ये लिखा है एक्सेस लाइन और सेंटर. सीजी यहाँ पर वेट आना चाहिए, जो उसका सेंटर पॉइंट है बिल्डिंग का, उसका वेट वहाँ आना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए. ये इसका मतलब है. But इसमें this one I'm showing is slab, columns, beams and foundations are connected together. That is structure. देखिए फाउंडेशन एक हिस्सा दिखाया सिर्फ, एक फाउंडेशन या लिखा भी है फाउंडेशन, और ये हर जगह जगह अलग अलग फ्रेम पे अलग अलग या एक साथ. दिस इज व्हाट आई ट्राई टू शो यू. इन पार्ट्स आपको दीजिए थोड़ा थोड़ा, तो एकदम नहीं दिखता है. ये जो पार्ट्स मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, स्ट्रक्चरल कंप्लीट स्ट्रक्चर, यूनिट स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का यूनिट स्ट्रक्चर एक साथ. all these columns, beams, slabs, foundations
must work together. That does it mean. Slab is there, all these arrows indicate slab. Structure, unit 1, frame इधर भी है, देखिए frame, all columns are in one frame, all beams are in one frame. और दूसरी साइड पर देखिए स्लैब जो पूरी दिखेगी यहाँ से आपको, तो बैलेंस थी उसका यहाँ. This I just tried to show you what actually this is. यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए, and I move further down. As I said, this is down, and this is now a completed building. As I showed you before also, foundation. All foundations are connected. All columns are connected. Beam foundation, best one for buildings. और देखिए नीचे इस तरह से एयर, बीम, फ्रेम, फाउंडेशन. नो ब्रिक इन फाउंडेशन, ओनली आरसीसी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसमें टेक्निकल इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये समझ आता है. नीचे एक बीम है पूरी ग्राउंड तक आ रही है, उसके ऊपर से हम कॉलम निकाल रहे हैं. इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं कि समझ नहीं आएगा आपको. कॉमन सेंस की बात है. आप देखे तो होंगे बिल्डिंग बनते हुए, और उसमें कुछ ऐसा नहीं है. बस कुछ काफ़ी स्केच बना रखे हैं समझाने के लिए. और जैसे इसके सारे कॉलम देखिए, अलग अलग कॉलम, ग्रिड हिसाब, अकॉर्डिंग टू ग्रिड्स दिस कॉलम्स आर डन, एंड वी हैव टू टेक केयर दैट डिज़ाइन शुड बी करेक्ट. It's not that because I want something I do something. No, it's not that way. It should be done in the right way. That's important. और आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे. और जब मैं फाउंडेशंस की बात कर रहा था, मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूँ आपको कि एक्चुअली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. दिस इज नॉर्मल फाउंडेशन which people construct. Normal foundation. Again I am telling you, this is normal foundation. But you see it closely. You'll see. You have to see it closely. What it is actually. You see. This trench is excavation. If you see this line, I'll show you my pen. I think it's better. Point it out better. You will understand that one better. You know, this is a trench. You know this is a trench here. This line excavation. This portion was excavated. This portion, and this portion is not excavated. This is earth. And this is earth here, not excavated. This portion is excavated up to here, and inside is structure. This is foundation. This is just the concrete below, and this is natural ground below, and this is foundation, and this is column part in ground. This is general foundation. We call it general foundation. Isolated footing it is given. Or independent footing, you can say independent footing. This is, आप इसको फाउंडेशन कहते हैं आम भाषा में, हम इसको फुटिंग कहते हैं, लेकिन बात एक ही है. ये एक प्रकार की वन टाइप ऑफ दिस इज. कॉलम इज शोन हियर, स्टील reinforcement is also shown here, overlap is also shown here. You can see there's overlap, and also I have shown some ply at near foundation. So ply, then batten, which is support, and this support is called shuttering or formwork. आपको कास्ट करने के लिए बनाना पड़ता है. इसके अंदर सरिया स्टील है देखिए, और कंक्रीट दिखाया जैसे डाल चुके हैं, वो दिखाया गया इसमें. थिकनेस देखिए, इसमें मोटाई लिखा है 200 to whatever 1 meter, or means depends upon design. And this is structural column. ग्राउंड लेवल शो किया यहाँ पे. ये इसका रिजल्ट प्रोडक्ट दिखाया कि किस तरह से आती है. ये इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा. इस हटा देंगे. व्हेन यू रिमूव शटरिंग यू विल फाइंड दिस शेप ऑफ concrete of foundation. I mean to say, this is final shape,
and this is another type which is not very common, but still people do. Means they join it like that, which is not practically correct or engineering wise correct, but still it's done if done properly. अभी इसमें जो पोर्शन है ना, ये ऊपर का जो स्लोप टेपरिंग पोर्शन है, ये क्वेश्चन रेस करता है कि यहाँ कॉम्पैक्टर सही नहीं, वाइब्रेटर सही नहीं चल सकता, या इसमें शर्टिंग पूरी लगाएंगे, उसमें भी आप लगाएंगे तो ये वाइब्रेटर ले सकता है, नहीं तो स्लोपिंग पोर्शन में यू हैव टू पुट शटर्स फॉर्म वर्क, अदरवाइज इट वॉन्ट वर्क. सो आई अवॉइड दिस. आज हम देखिए एरो लगा रखा, क्वेश्चन मार्क लगाया, उसको आप देखिए, वो है खास प्रॉब्लम वाली शर्ट जो जनरल लोग करते हैं. दे डो नॉट अंडरस्टैंड वेदर इट इज़ राइट और इट्स रॉन्ग, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. और ये थोड़ा एक ऑर्डिनरी फाउंडेशन जो आपको करते हैं सब, हालांकि ज़रूरी नहीं है कुछ ऐसा किया जाए, लेकिन ये स्टार्ट है इंजीनियरिंग का. इस कंस्ट्रक्शन लाइन में ये चलता है आजकल, पहले भी चलता था, अभी भी हो रहा है. और इसका मतलब ये है कि मैंने जो आपको बताया ये फाउंडेशन, मैंने कहा यार यहाँ से लिखना नहीं, अभी मैं आगे भी बताऊंगा, पहले इसको एक्सप्लेन कर दें आखिर ये फाउंडेशन है क्या. व्हाट इज दिस फाउंडेशन विच आई एम शोइंग, आइसोलेटेड फुटिंग या इंडिपेंडेंट फुटिंग. ये इज ओनली फॉर वन कॉलम विच आई शो टू यू. लोड ऑफ स्लैब, स्लैब से लोड आया, स्लैब से बीम पे आया. बीम में जानते हैं, मैंने दिखाई है आपको बीम क्या होती है. जो मैंने फ्रेमवर्क दिखाया है अभी आपको, ये वाला, इसमें कनेक्शंस दिखाए हैं बहुत सारे, आपस में फ्रेमिंग है. ये फ्रेमिंग ही है मेन चीज़, इसमें बीम भी है. और जो मैंने आपको अभी फोटोग्राफ दिखाई थी उसमें भी बीम है, और वो बीम स्लैब की सपोर्ट करती है, जैसे मैंने इसमें दिखाया स्लैब की सपोर्ट करती है. ये स्लैब कॉलम्स और बीम एक साथ हैं, बीम स्लैब कॉलम, और ये नीचे फाउंडेशन तक जा रहे हैं. अब उसको समझना है. देखिए स्लैब, दिस इज स्लैब, बीम्स, these are beams and columns, 3 elements. जनरली छत जिसको आप बोलते हैं हम स्लैब बोलते हैं, आप उसको लेंटर बोलते हैं, हम स्लैब बोलते हैं. स्लैब, beams with slab and columns, then another story below and same thing until we reach ground, and from ground small column in and foundation. That is structure. Structure is that a unit comprising of all slabs, all beams, all columns and foundation. This is ढांचा, आपके मकान का लोड लेने वाला ढांचा. ये सही है अगर, if it's fine, you are fine. And if this is not fine, you are not fine. It should be very strong, and it should have relation with foundation earth. It should have relation with everything. This structure is building actually. Actually this is building in fact. Others are supporting arrangements. Walls, brick wall or concrete block wall, plastering, electrical services, mechanical services, air conditioning services, plumbing services, or CCTV or else all IT. These are all services. This structure is also services, but this is different kind of services. This service cannot be withdrawn, cannot be put off, just like we put off electric. Light is off, we control switch you put off, light is off. AC you put off, work is off. CCTV you put off, it's off. But this structure is continuous, without fail, without any stoppage. This works without any problem. Just like
My body works since I was born, and it is working now, and it works up to time when I leave this world. That is building, and this is building. In building, there are various forces. In old language, we call dead load, live load, wind load, earthquake load, thermal load, this load, snow load, or many kinds of loads. In old language, these load demand service from this structure. ये लोड कहते हैं स्ट्रक्चर, महाराज हमारी सेवा कीजिए, हम आपके ऊपर रहना चाहते हैं। हवा आपको रहना, हवा का धक्का मारना चाहती है आपको अर्थक्वेक की जो फोर्स है, भूचाल की फोर्स है, वो हिलाना चाहती है। गर्मी आपको फाड़ना चाहती है, पसीना देना चाहती है। बारिश में आपको तंग करना चाहती है। हम सब मिल के आपको कभी ना कभी तंग करेंगे। स्ट्रक्चर जी, इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि हमारी ताकत से आप गिर ना जाओ, हमारी ताकत से आप जीते रहो और जो काम कर रहे करते रहो, नहीं तो हम आपको गिरा देंगे, फिर शिकायत मत करना। ये है ढांचा, उसका काम। वो चिनाई को ये नहीं बोलेगा कि चिनाई ठीक हो जाओ, गिर जाएगी दोबारा हो जाएगी, चिंता की बात नहीं है। और चिनाई गिरेगी तो प्लस्तर भी गिर जाएगा, पेंट भी गिर जाएगा, लेकिन ढांचा गिरेगा तो सब कुछ गिर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ रिकवर नहीं होगा। उसी के लिए हम सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, स्ट्रक्चर को कैसे बनाएं। ये भी एक विज्ञान का काम है। स्ट्रक्चर को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कैसे बनाएं। इसी के बात को हम गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन नहीं, हम गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं, हमारे पास सब एक्सपर्ट हैं, वो सब जानते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपके एक्सपर्ट आपको मुबारक, आपके प्रोसीजर आपको मुबारक, लेकिन हम एक बार बन जाते हैं, हम एक बार स्ट्रक्चर बन जाते हैं, हम ढांचा बना लेते हैं, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। मजाक नहीं है कि हम उसको चेंज कर दें, ये आसान नहीं है। स्ट्रक्चर में बहुत डिफेक्ट्स आ जाते हैं। पानी लीक कर रहा है, सही तरह से कंक्रीट नहीं डाली गई, सही तरह से डिज़ाइन नहीं हुआ, और स्ट्रक्चर काम पूरा नहीं कर रहा। जिस तरह हमारा शरीर सही ना बना हो, हमारे अंदर बीमारियां आ जाएं, वी आर सिक, वी आर नॉट वेल बिल्ट, इट अप्लाइज टू ऑल स्ट्रक्चर्स। नेवर से दिस इज स्मॉल हाउस, नो प्रॉब्लम। नेवर से दिस इज टू स्टोरी हाउस, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एक्सिस्ट एवरीवेयर। ये ढांचा है, एक भी गलत काम हो गया, स्लैब की मोटाई गलत हो गई, सरिये गलत डिज़ाइन हो गए, या ध्यान नहीं रखा गया फाउंडेशन का, ध्यान नहीं रखा गया कॉलम्स का कैसे बनाए जाए, तो आपका ये स्ट्रक्चर, ये ढांचा कभी ना कभी गिरेगा। और याद रख लेना, ये गिरने से पहले कोर्ट का नोटिस नहीं भेजता है, या म्यूनिसिपैलिटी का नोटिस भी नहीं भेजता है गिरने से पहले, और सच पूछो तो नोटिस भेजता ही नहीं। कुछ केसों में कभी कभी दया दिखा देता है, एक दो क्रैक दिखा दिया, कुछ दिखा दिया समझने के लिए कि देखो भाई आपकी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और अगर तभी भी कंट्रोल की जाए तो ये शांत हो जाता है। मैं इंजीनियरिंग भाषा में नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं एक ऐसी भाषा बता रहा हूँ जो एक आम आदमी की, आम नागरिक की भाषा है। कविता नहीं है ये, पोएम नहीं है, ये वास्तविकता है, रियलिटी ऑफ लाइफ।
मजाक में नहीं लो। ये मेशन बना देगा, कारपेंटर बना देगा, बिल्डर बना देगा, प्रमोटर बना देगा, उनमें से कोई भी सही नहीं बनाएगा, बना जरूर देंगे। डिफेक्टिव बनाएंगे, पता नहीं होगा, होता है। अब जैसे मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, माइंड नहीं करना, एक फ़ोटो दिखाता हूँ, अजीब सी बात, कोई ध्यान नहीं स्ट्रक्चर पे, बस बना दो। तो मैंने लिया था चलते चलते कहीं, देख कर किस तरह से गुस्सा भी आ जाता है कई बार, लेकिन हमारे हाथ में है कुछ नहीं। पब्लिक है, किसी की सुनते नहीं है, और जब मार खाती है तो रोती रहती है, शिकायतें करती रहती है, और उसका कोई इलाज नहीं होता। और शायद हम लोग भी सीरियस नहीं हैं, हम इंजीनियरिंग के लोग बहुत गलत हैं, ना पब्लिक को समझाते हैं, ना पब्लिक समझना चाहती है। अब देखिए एक बिल्डिंग है, दिखा दो पास बाकी, एक बनी हुई बिल्डिंग है, कहीं मैंने देखी थी। आप ध्यान से देखिए, इसमें बालकनीज निकाली गई हैं, और ये जनरली सब बिल्डिंग में होता है। 2-2 मीटर की बालकनीज निकाल देते हैं, आगे लटका देते हैं हवा में, और जब प्रॉब्लम आती है तो कुछ और कर देते हैं उसमें। ये देखिए, एक आप अलग से एक कॉलम सा देख रहे होंगे, कलर डिफरेंट कलर में, इसकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने लगा दिया। बस क्यों लगा दिया शायद लगाने वाले भी नहीं जानते। और ये बालकनी जो 2-2 मीटर की प्रोजेक्शन है, ज़्यादा है, उसमें आप देखिए कोई बीम नहीं है, कोई बीम नहीं है उसमें, और कोई किसी को चिंता नहीं है, बस बिल्डिंग खड़ी रहनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है, कोई स्ट्रक्चर की बात उसमें नहीं किसने सोची, बस बना दो, मतलब बनाने से है, और किसी बात से मतलब नहीं है। बन गई, खड़ी रहेगी, बनाने वाला चला जाएगा, और आप उसे देखते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। मतलब कहने का ये है। और मैं अभी आपको क्या दिखाना चाहता था, शायद वो साफ नहीं आया फ़ोटो, इसलिए मैं पूरा नहीं दिखा पाऊँगा। और वो क्या है, यस देखिए, ऐसे देखिए, ये ऐसे है। देखिए ये एक बालकनी है, ये भी 6 फीट है, ज़्यादा है। आप ध्यान से देखिए, खिड़की के ऊपर स्लैब, और ये स्लैब बालकनी 6 फीट की, और इसके अंदर बीम्स दिखे, देखिए ऐसे नहीं है, बीम्स आपने दिखे, और ऊपर पैरापेट है, बीम नीचे भी है स्लैब पे, और जो बालकनी है वहाँ भी बीम के ऊपर स्लैब है बालकनी की। ये लोग जनरली नहीं देते, देना जरूरी है। मैं दूसरा भी दिखाता हूँ आपको इसका, तो अंदर का हो गया, 1 मिनट, हाँ ये मिल गया, ये देखिए, ये दिख रही होगी साफ थोड़ी सी आपको, ये इसमें बीम लगी है, देखो ये बीम, बालकनी की बीम, ये बीम से, वो शेड बाद में लगाया गया था, ये बीम से बालकनी की। ये बीम्स, और नीचे की बीम स्लैब की है, दूसरी बीम है भाई, ये क्रॉस जो बीम दिखा रहा हूँ मैं आपको, उसकी बात कर रहा हूँ। ये लोग समझते नहीं हैं, बस बना देते हैं। जब तक आपकी शरीर की हड्डियां, जो बोन्स होता है शरीर में, हम सबके शरीर में बोन्स हैं, सर से लेके यहाँ से लेके और पैरों तक, वी हैव ऑल बोन्स नेटवर्क। स्कल, इसके अंदर बहुत कुछ, लेकिन मेन स्ट्रक्चर ये जो हार्डवेयर है ऊपर, स्कल जिसको कहते हैं, रेजिस्टेंस यही लेता है, कहीं चोट लगेगी तो, अंदर का माइंड तो नहीं लेगा। ये यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक, और हाथों में, पैरों में, सब जगह एक तरह की हड्डियाँ, बोन्स का स्केलेटन, जिसको हम कहते हैं स्केलेटन है। कितनी उसमें आप देखा होगा बोन्स होती, कम many bones are there from top to bottom. That is what I am talking about. This structure is anatomy of building. It's a network, or you can say skeleton
of bones and intestines. Slab we are saying, beams I'm saying, columns I'm saying, and there are walls also. Shear wall, other walls and stairs, waste slab, and foundations, beams. In foundation, many structures. This all is like a system, like hardware, and thousands and thousands of bars, steel bars are hidden in that, embedded in that, and there is purpose for that. It's not my happiness that I want them, or it's your happiness you want them. No, it's not question of happiness. Happiness is for use of building, not for these items. These are requirements of building. जरूरत है ये बिल्डिंग को, उसको जीने के लिए, उसको सांस लेने के लिए, उसको खड़ी रहने के लिए. अगर वो जिएगी नहीं, खड़ी नहीं रहेगी, सांस नहीं लेगी, तो जो रहता है उसमें वो कैसे रहेगा, उसको वो सेवा कैसे देगी. इस बात को समझना चाहिए. हर बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए. पहली बात तो ये कि आपके लिए है ये, आपके जीवन के लिए है ये, आपके बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए है ये. मजाक में लेना तो वैसे ही ठीक नहीं है. दूसरा, इट इज़ योर मनी, इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी, और इट इज़ योर लोन मनी, और वॉट एवर मनी, इट इज़ योर सेविंग. You invest in your building, you spend on your building, so you should be serious about that. आप छोटा सा सामान लेने जाते हैं बाज़ार में, एक कुर्सी लेनी है प्लास्टिक की, कोई छोटी आइटम लेनी है, सोचते हैं क्वालिटी कैसी होगी नहीं होगी, या पूछते हैं तो पता लगता है आपको समझ आ गई. सेल्समैन ने आपको कुछ भी बोलेगा, सामान बेचना है उसको तो बोलेगा, लेकिन जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या मिला, वो पता लगेगा. पर जहाँ तक बात बिल्डिंग की है, मकान की है, आपको कोई बताएगा नहीं कि इसमें क्या है, पूछेंगे भी नहीं कि इसमें क्या है. वो बस थोड़ी बहुत ऐड दे देगा, खुश कर देगा आपको, दिखा कि देखिए क्या फिनिश आएंगे, क्या देखने में लगेगी. आप वहीं जाके स्टॉप कर जाते हैं कि भाई अच्छी बिल्डिंग है, देखने में अच्छी लग रही है, क्योंकि आपको दिखानी है अपने रिश्तेदारों को, आपको दिखानी है अपने दोस्तों को, वो दिखाने के लिए सुंदरता चाहिए. लेकिन सुंदरता के पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता. कार बड़ी सुंदर होती है देखने में, चाहे कोई सी हो, उसकी बॉडी बड़ी अच्छी होती है, और उसकी शीट बड़े अच्छे कलर की होती है, लेकिन जब आपका इंजन खोल के देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है. एक अजीब सा सर्किट होता है उसमें, कार्बोरेटर है, रेडिएटर है, ये है वो है करके एक फैक्ट्री से नज़र आती है अंदर. तो छोटी सी फैक्ट्री काम कर रही है. वो फैक्ट्री देखने में सुंदर नहीं लगती, लेकिन जब वो बंद करके देखते हैं तो अच्छी लगती है. वही हाल यहाँ है. हम जो आप बता रहे हैं बात को, आप फैक्ट्री की बात बता रहे हैं. इस बिल्डिंग के अंदर भी फैक्ट्री है जो अपना काम करती है. आप क्या समझते हैं सरिये डालने का मजाक आता है? मज़ा आता है सरिये डालने का? आपको जानना चाहिए एक एक सरिये का काम है अंदर, एक एक बीम का काम है, एक एक कॉलम का काम है, और फाउंडेशन का सबका काम है. इसलिए लगाए जाते हैं कि अपना काम करें. We want them fixing because these are required there for purpose to serve some forces that are coming there to resist those forces. And those types of forces are many. Self-weight of building is called dead load of building or dead action of building. RCC on flooring both. आपका स्लैब डाला आपने, उसके ऊपर आप फ्लोरिंग भी डालेंगे, वॉल भी बनाएंगे, वो सब डेड लोड में आता है, जो चेंज नहीं हो सकता. जो स्लैब डाल दिया आपने, लैंडर डाल दिया, जो बीम खड़ा कर दिया, कॉलम खड़ा कर दिया, कंक्रीट डाल दी, तैयार कर दिया, तैयार है जी. फिर आपने वॉल बना दी, उसके ऊपर फ्लोर बना दिया, स्लैब के ऊपर प्लास्टर कर दिया, सीलिंग कर दी, सब लगा दिया. जो लोड हटा नहीं सकते वहाँ से, बिल्डिंग से,
उसको कहते हैं डेड लोड। परमानेंट है, वो वहाँ हटेगा नहीं। उसकी कैलकुलेशन दूसरे तरीके से है, हर एक के रूल्स हैं, हम लेते हैं अपने कैलकुलेशन में। हाउ मच वी हैव टू टेक, कोड्स में है, अलग से है, और हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर है, दैट वी कंसिडर वन वे और अदर वे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइटम, डेड लोड. After that, there is a load which shall come sometime, shall not come sometime. For example, I am standing on my floor, you are standing there. What is that? You have brought some articles and put there. All this is live load that can be removed, that can be placed. That can be, you are using a floor, playing, walking, all this is live load, which is not constant. एक सा नहीं है, आप यहाँ खड़े हैं, वहाँ नहीं खड़े हैं, वहाँ खड़े हैं, यहाँ नहीं खड़े हैं, ये सारे में यूनिफॉर्म नहीं है, एक सा नहीं है, चेंज होता रहता है. लेकिन डेड लोड हटता नहीं है. एक बार लगने के बाद ये दोनों चीज़ें अलग अलग कैलकुलेट की जाती हैं. इसलिए एक को डेड लोड कहते हैं, एक को मरा हुआ वेट, एक को जिंदा वेट, काम करता हुआ वेट, लाइव लोड. ये बड़ी नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको. ये तो दो तरह के लोड हुए जो बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं. ये बहुत कुछ बताते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपको करना क्या है. ये एक्चुअली बेसिक लोड्स हैं, फंडामेंटल लोड्स कह सकते हैं इसको आपको. जैसे आपका वजन कितना है, कितनी हाइट है, कितना होना चाहिए, कितना प्रेशर पड़ेगा आपका इस चीज़ पे. बहुत कॉमन चीज़, हर आदमी चिंतित होता है, मेरा लंबाई है, मेरा वेट बढ़ गया, मेरा वेट कम हो गया. लेकिन यहाँ कांस्टेंट रहेगा जब तक वो रहेगा. उसका कारण है वही लोड नीचे जाना है मिट्टी पे ही, फाउंडेशन में. ये एक छोटी छोटी बातें मैंने की आपसे, लेकिन प्राइम बातें हैं, इस बात को समझना चाहिए. तोलते नहीं हम तराजू में, बिल्कुल नहीं तोलते, तोल भी नहीं सकता. कि आपने कहा जी हम तो तोल लेंगे, ट्रक का वेट तोलते हैं वे ब्रिज पे. यहाँ वे ब्रिज नहीं है, वे ब्रिज यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना वेट आएगा, कॉलम में कितना वेट है, कॉलम में बीम में कितना वेट है, स्लैब में कितना वेट है, फर्श डालेंगे उसमें कितना वेट है, इसमें दीवार खड़ी करेंगे उसमें कितना वेट है. वी हैव टू टेक ऑल पॉइंट्स इनटू आवर कंसिडरेशन about weight of beam, weight of column, weight of slab, weight of wall, and all other items. That is a must. We cannot take, we start in my hands to move freely. I am a control person. I am a control. Codes tell me what to do. All countries code, they have different purposes. Or we can calculate also if code doesn't tell that. There is no bar to that. रुकावट नहीं है. अगर कोड में नहीं है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, करना पड़ता है. ये मेजर बात है. और फिर आते हैं दूसरे वेट जो आते हैं जाते हैं, आ गए नहीं आ गए. देयर इज नो रेगुलरिटी ऑन देम, दे कम बाय एक्सीडेंट और बाय वट एवर एल्स. नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, कुछ हो जाए, प्रकृति में कुछ हो जाए. डेड लाइन लोग को हटाइए पीछे, आगे चलते हैं. हवा चल रही है, ऊंची बिल्डिंग है, डर लग रहा है, क्योंकि मैं भी तो खड़ा खड़ा हवा के झोंके में आता हूँ. वो हवा का झोंका आया, कहते ना गाने में, आया झोंका और क्या कर गया, गिरा गया पेड़. मेरी बिल्डिंग में एक पेड़ है, भारी पेड़. हवा का झोंका इतना ज़्यादा ना आ जाए कि मेरी बिल्डिंग हिल जाए, इधर को हिल जाए, उधर को हिल जाए, इधर को हिल जाए, इधर को हिल जाए. क्योंकि जब हवा तीनों चारों डायरेक्शन में चलती है, 360 के एंगल में चलती है, तो बिल्डिंग भी वैसे ही नाच सकती है, हल्की हल्की, बहुत तेज़ी से नहीं. उससे भी बचाना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है परमानेंट, गिरेगा तो नहीं, एकदम हिलेगा जरूर. वही हमको चाहिए. धूप बड़ी तेजी से पड़ रही है, 50 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस चले जा रहा है गर्मी में, और साथ में गर्म हवा मेरी बिल्डिंग को गर्म कर देगी, मुझे गर्म कर देगी. भाई साहब, मैं कंक्रीट हूँ, मैं गर्म हो जाऊंगी, मुझे गर्मी लगेगी, कौन नहलाएगा मुझको, कौन पानी देगा मुझको. क्वेश्चन पूछती तो सोचना पड़ेगा हमको कि बिल्डिंग क्वेश्चन पूछ रही है, कंक्रीट क्वेश्चन पूछ रही है.
ख्यालों में नहीं है, पूछ रही है, उसकी डिमांड हमें पूरी करनी पड़ेगी। डिज़ाइन में हमें देखना पड़ेगा कितना टेम्परेचर आएगा, कितनी ह्यूमिडिटी आएगी, कितने कार्बन पदार्थ आएंगे उसमें, कितनी नाइट्रोजन उसमें आएगी, हवा से आएगी, वो सह सकती है या नहीं, ठंड कितनी पड़ेगी, बर्फ़ कितनी पड़ेगी, वो सह सकती है कि नहीं। वो सब भी लोड हैं, थर्मल लोड, विंड लोड, और साहब भूचाल महोदय आ गए, वो किसी की सुनते नहीं है। मिस्टर भूचाल, मिस्टर सेस्मिक एक्शन, वो किसी की नहीं सुनता, नहीं सुनता। वो हवा का तो पता लग जाता है भी आने वाली है, थोड़ी देर में आ रही है, मौसम ठीक नहीं है, लेकिन भूचाल तो बात भी नहीं करता, आता है एकदम, चला जाता है एकदम, रुकता भी नहीं है, हमको जानता भी नहीं है, आया और चला गया। डर गए साहब, बिल्डिंग हिल गई। बिल्डिंग तो हिलेगी, भूचाल है, उसका नाम ही भूचाल है, अर्थक्वेक है, अर्थ को क्वेक करता है, भू को चलाता है, उसका नाम ही भूचाल है। हल्लन भी बोलते हैं, वो जो हलता है, वो हलाता है सब कुछ, नाम कोई भी हो। हम बोलते हैं टेक्निक सिस्मिक एक्शन, सिस्मिक एक्शन नाम है उसका। भूचाल का फोर्स जो होता है बिल्डिंग के फाउंडेशन से शुरू के ऊपर तक जाता है, हिलाता है उसको, और हिलना भी जरूरी है, क्योंकि हिलने से वो जो एनर्जी आती है उसके अंदर भूचाल से, वो निकल जाती है आहिस्ता आहिस्ता, कुछ सेकंड में हिल जाती है, निकल जाती है। आग लग गई बिल्डिंग में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। भूचाल हमने सह लिया, हवा हमने सह ली, मरा हुआ लोड ले लिया और जिंदा लोड ले लिया। अब आग का मैं क्या करूं, मेरे कंट्रोल में आग नहीं है, पूछ के नहीं लगती और लगने के बाद समझती भी नहीं, बात भी नहीं करती, लगती जाती है, लगती जाती है। ना मैं उसको रोक सकता हूँ, स्टोर में बांध करके रख सकता हूँ, ना मैं रस्सी से उसको बांध सकता हूँ, मेरे ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही आग है। आग मैं नहीं सुनती किसी की, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हवा का भी वो साथ देती है, हवा भी उसका साथ देती है। पानी उसका साथ नहीं देता है, लेकिन पानी हर वक्त होता नहीं। इसीलिए फायर लोड एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, जो कभी कभी होती भी है, साल में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, और नहीं हुई तो नहीं हुई। फायर लोड, आग कितनी लगेगी, कितनी देर तक ये आग में खड़ी रह सकती है, ये प्रश्न आ जाता है। शायद आप सोचते नहीं होंगे ऐसा। मैं तो 2 घंटे तक जलूंगी, जो करना है कर लो, क्या करेंगे आप? मैं नहीं बुझती, जाइए, ऐसे ही जलूंगी, जलाऊंगी, मेरा तो काम है ये जलाना। लेकिन पानी उसका दोस्त नहीं है, जलाओ, आग रानी जलो, मैं डालता हूँ पानी राजा आपके ऊपर, पानी आपका हो जाएगा काम। अब वो पानी कब उसके ऊपर आता है, सवाल ही उठता है। आधे घंटे में उसको पानी मिल जाता है आपको, या 1 घंटे में मिलता है, 2 घंटे में मिलता है, वो चीज़ सोचने वाली है, क्योंकि हम आग को बुझा नहीं सकते अपने आप। पानी ही बुझाएगा या कोई और मटेरियल बुझाएगा, हम तो लग नहीं दे सकते, हाथ से उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि बिल्डिंग है। कोई एक अमानों के ऊपर होते, हम कंबल डाल देते, शायद बुझ जाती। देखो यहाँ तो धुआं भी साथ में देती है वो। तो ये चीज़ भी थोड़ा समझना चाहिए, हम इस बात को डिज़ाइन में लेते हैं या नहीं लेते हैं। हवा को लेते हैं, भूचाल को लेते हैं, आग लगने को लेते हैं, जिंदे लोड को लेते हैं, मरे लोड को लेते हैं, और दूसरे किस्म के मैनी मोर टाइप्स ऑफ energies and forces are available, which we have to consider while designing all this. And that's what I'm telling you in very, very common language, why we should consider all that. बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी में जिस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं, वो एक्चुअल लोड नहीं है, टेंटेटिव लोड है। ऐसा होगा, हो सकता है, ये सोच के लेते हैं। नापा नहीं हमने, तोला नहीं हमने, तोल भी नहीं सकते, एज्यूम किया कि इतना तो होना ही चाहिए, और होता है। वो ले सकती है, ज़्यादा बेशक ना हो, उतना तो वो ले ही सकती है। ये पता है, ये पब्लिक को पता होना चाहिए कि हम किस किस वजह से, कितनी झुकेगी स्लैब, कितनी झुकेगी बीम, या कितनी खुलेगी वो,
वो सब के भी फार्मूले हैं जो हमने लिखे हैं। आप अगर इंजीनियरिंग में हैं तो कोई बात नहीं, आप जानते होंगे, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग में नहीं है तो ये बातें समझनी बहुत ज़रूरी होती है। खाली कह देना बिल्डिंग मिशन ने बनाई चला गया, नहीं, वो बिल्डिंग बना दी लेकिन वो समझा नहीं उसने क्या बनाया, समझना भी जरूरी है। और जिस दिन समझ आ जाएगा तो हम अपनी लाइन पे वापस आ जाएंगे, और जब समझ नहीं आएगा आप नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, दैट्स आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू पीपल व्हाट वी शुड कंसिडर: डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, थर्मल लोड, सन लोड, एंड योर seismic action and many other actions. These actions are very significant because these, even you do not think of them, they will think for themselves. And in 4 dot loads, कोई अनाउंस नहीं करेगा आपको कह कि हम खुश हैं इन लोडों से। वो तो चाहते हैं नॉर्मल रहे, जैसे आराम से लेटते हैं सारा दिन, जैसे लेटे कमरे में। बट दैट्स नॉट ए वे ऑफ लाइफ। अगर हमको जीना है, हमको बिल्डिंग का यूज़ करना है, तो आपको अपने आप को संभालना ही पड़ेगा, नहीं तो मार खा जाएंगे। वो मार ही तो हमको नहीं खानी चाहिए, यही तो इम्पोर्टेंट है। वो मार मैं भी नहीं खाना चाहता और आप भी नहीं खाना चाहेंगे। इसलिए ये आपको बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आम भाषा में, आम लोगों के लिए। आपको थोड़ा समझना चाहिए, जैसा लोग बनाते हैं वो गलत है, उनकी अलग टेक्नोलॉजी है, वो बस अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। उनको ना सीखने की ज़रूरत है, ना वो सिखाने की ज़रूरत है, गलत ही सही है उनके लिए। बस यही बात ज़रूरी है समझनी, कि आप इसको इतनी आसानी से ना लीजिए। आप अगर अपने लिए बनाते हैं तो भी, और दूसरे लिए बनाते हैं तो भी, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या करना है। कौन बताएगा आपको? बताइए आप। बहुत से लोग कहते हैं यार कौन चक्कर में पड़े, हम तो बिल्डर को दे देते हैं, प्रमोटर को दे देते हैं, बना के दे देगा अपने आप, बना के दे देगा, ठीक है, आपकी हेडेक ख़त्म हो गई। लेकिन वो क्या ले जाएगा आपको पता भी नहीं है, वो क्या क्या आपसे ले जाएगा, और आपकी भी ऐड करके बाहर वो बेच देगा। ये इंजीनियरिंग नहीं है, इंजीनियरिंग कुछ और। हम जो बात कर रहे हैं, ये करना है, वही पार्ट है इंजीनियरिंग। एंड दैट पार्ट वी डू नॉट अंडरस्टैंड, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। अब हम कह देते हैं जी आप, जिसमें मैंने आपको फाउंडेशन का समझाया, फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन कितने तरीके हैं। जिसमें कंबाइंड फुटिंग आपको बताया, शायद अब ध्यान नहीं होगा आपको, मैं सिखाता हूँ आपको कंबाइंड फुटिंग की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। आखिर पहले मैंने बताया था आपको कंबाइंड फुटिंग होती क्या है, नाम ही है उसका कंबाइंड। दो चीज़ों को ज्वाइन कर देना, एक बना देना फाउंडेशन होगी। चीज़ों को ज्वाइन नहीं कर देना, उनकी फाउंडेशन को ज्वाइन कर देना, चीज़ तो अलग ही रहेगी। कॉलम्स हैं दो, पाए बिल्डिंग के, एक बॉर्डर पे है बिल्डिंग के, उधर रेस्ट्रिक्शन दी है कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि ये दूसरे की प्रॉपर्टी है, सड़क है, हमें वहाँ रुकना ही पड़ेगा। और जब रुक जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? अंदर रहेंगे, अंदर रहेंगे उसके। लेकिन अगर वो सही नहीं बनी तब क्या करेंगे? एक मिनट आपको बताता हूँ, कल भी बताया था आपको। आप देखिए, ये सॉरी ये एक बिल्डिंग फाउंडेशन, सॉरी फाउंडेशन, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फाउंडेशन, ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम बिल्कुल बॉर्डर के इस तरफ किसी और बिल्डिंग, कोई और बिल्डिंग, उधर आपका राइट नहीं है। आपके इन दो कॉलम का, ये तो इधर का कॉलम है गया टूर का, यहाँ आप अलग से इसको फाउंडेशन नहीं दे सकते, रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ दूसरी बिल्डिंग लगी है, यू कैन नॉट यूज़ दैट पोर्शन। आप इसकी फाउंडेशन जो दूसरी है यहाँ पर, इसकी फाउंडेशन इस तरफ नहीं ले सकते कि वो दूसरी बिल्डिंग है, आपको अलग ही लेनी होगी। यहाँ पे अगर अलग से बनाएंगे फाउंडेशन तो उससे बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, टेक्निकल प्रॉब्लम, ये बहुत सी लोड बाहर आ जाएंगे उसकी लाइन से, उसके सेंटर से, और वो हमारे फिलॉसफी में, इंजीनियरिंग की थ्योरी में उसको हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो बिल्डिंग को टेढ़ी कर देगी। इसलिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, these two columns, one is that one
जो आपको रास्ते में रोक रहा है। पुलिस बैठा दी उसने यहाँ, ये दूसरी पुलिस है, ये आपको इधर नहीं आने देगी। और एक इधर है जो नॉर्मल सिचुएशन में है, ये वाला जहाँ आपका एरिया है, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कहेंगे, इन दोनों फाउंडेशन की जो लाइन आपको दिख रही है रेक्टेंगल ये वाली, इससे इनको मिला दीजिए ताकि ये दोनों लोड इस कॉलम की फोर्स और इस कॉलम की फोर्स एक साथ बिहेव कर सके और हमें इसकी सीजी को, इसके सेंट्रल लोड को संभाल सकें। इन दोनों कॉलम पे जो भी लोड आएगा, वट एवर लोड दिस टू कॉलम्स आर गोइंग टू बियर from above and whatever stories, how many stories are doesn't matter, from each story load has to come down। जितने भी मंजिले ऊपर हों उन सब के लोड नीचे आएंगे और अपने अपने कॉलम पे चले जाएंगे। इस पोर्शन के लोड इस कॉलम बीम के ऊपर, जो भी बीम है उसके ऊपर जो भी लोड आएगा वो इन कॉलमों पे अपने हिसाब से आएंगे और इन कॉलमों से फिर हम डिज़ाइन करेंगे लोड को। इसमें बहुत काम होता है। इसमें देखिए पहले तो ये होता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है करीब करीब। ये इसका लॉन्ग सीधा काटा हुआ सेक्शन है, ये वही है। एक कॉलम देखिए यहाँ है और दूसरा कॉलम यहाँ है। ये दोनों को कंबाइंड लोड लेके इसको डिज़ाइन किया जाता है। उसकी बहुत बड़ा फार्मूला है, वो मैं नहीं बता सकता इस टाइम, लेकिन हाँ वो रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल जैसे मैंने ऊपर रेक्टेंगल बनाया और इसमें बहुत किस्म की रेनफोर्स बनाएगी, बहुत मोटाई आएगी रेनफोर्स, जो मैंने कल बताया था आपको। रिंग्स आएंगे जैसे मैंने यहाँ दिखाई भी हैं, साइड वर्क में देख लीजिए। ये एक कॉलम है, बीम सॉरी फाउंडेशन है, और ये आपके इधर इसका सेक्शन है। इसमें उसकी विड्थ भी दी है, डेप्थ भी दी है और कितने सरिये उसमें आने चाहिए, डाया कुछ भी हो और कैसे कर 8 लेग का मैंने दिखाया है। 8 लेग का 4 6 2 8 लेग, 12 लेग भी हो सकते हैं, 12 लेग भी हो सकते हैं। लेग मतलब समझ रहे हैं आप, लेग का मतलब आपके पैर नहीं, और कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। मैं जो लेग कह रहा हूँ उसका मतलब है, देखिए यहाँ पर लेग्स हैं यार, एक बार मुश्किल होता है दिखाना। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये जो आपके लेग्स में कह रहा हूँ, ये वाले लेग्स, ये देखिए इसमें आप देखिए इसका एक लेग, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं और एक है 2 4 6 and 8 और 12 का भी होता है। जब ये 5 सरिये हैं, देखिए इसमें सरिये 5 गोल गोल दिखाए हैं, ये गोल गोल सरिये देखें आपने, गोल गोल ये सरिये ऊपर और ये नीचे, 5 सरिये ऊपर, 5 स्टिल अप and 5 स्टिल डाउन, and in between these 3 middle one have 6 bars and both ends 1 bars, so 8 legged frame, एक लेग लिस्टर। और इसके बढ़ भी सकते हैं अगर हम इसको 8 सरिये डाल दें, सॉरी 8 सरिये नहीं, अगर इसको 8 लेग 12 लेग कर दें तो मतलब 2 इधर 10 बज के बीच में 5 सरिये आने चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसके हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हैं। इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी होती हैं। हम क्या देखते हैं कि दोनों जो एक कॉलम है, यहाँ पर कॉलम यहाँ पर कॉलम, इन दोनों का लोड कॉमन एक्सिस पे आए, जो इनका एक्सिस है डायमेंशन का एक्सिस। मान लीजिए 10 मीटर लेंथ है, मान लीजिए 8 मीटर लेंथ है, अगर 10 है तो 5 मीटर इधर हो गया एक्सिस से, 5 मीटर इधर, उसी के हिसाब से कॉलम होना चाहिए और कॉलम के लोड वहाँ जाने चाहिए। उस एरिया का एक्सेस, एरिया का जो सीजी का, जहाँ पर दो आधा एरिया इधर आधा एरिया इधर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दैट। ऐसे आधा एरिया इस वाले एक्सेस से इधर और आधा इधर अगर है तो उस केस में हमको देखना है कि जो लोड है इसका, यहाँ वाला एरिया का लोड और वेट का लोड एक पॉइंट पे आना चाहिए। आप जानते होंगे सीजी क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो कहाँ लोकेट होती है, और वही चीज़ हम फॉलो करते हैं इसमें कि इस पॉइंट को कैसे ढूंढा जाए। और जहाँ भी वो पॉइंट आता है कॉमन एक्सिस का, उसको हमें यूज़ करना है। देखिए कि ये सेंटर से कितना आउट हो गया है। ये फॉर्मूला है, फाइंड योर दिस क्वेश्चन इज दैट, फाइंड समथिंग एंड यू हैव टू आंसर दैट। ये चीज़ आपको अगर मिल जाती है, आपने लोड बैलेंसिंग कर दी, व्हील बैलेंसिंग आप करते हैं कार, यहाँ आपने लोड बैलेंस कैलकुलेशन में कर लिया कि मेरा को एरिया का जो पॉइंट है बीच का, जहाँ दोनों तरफ बराबर एरिया है, और ये लोड का जो पॉइंट है वो भी आ जाता है वहाँ पे, तो बिल्डिंग का डिज़ाइन अच्छा हो जाता है, वरी नहीं होती क्योंकि हमने इसको संभाला। फिर बिल्डिंग ये नहीं कि एक कॉर्नर से नीचे है और दूसरे ज़्यादा नीचे है, वो नहीं चलेगा। इसको कहते हैं कंबाइंड फुटिंग। 2 कॉलम्स को कंबाइन किया और फाउंडेशन बनाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होती है ख़ास तौर से जहाँ इधर भी बिल्डिंग होती है उधर भी बिल्डिंग होती है, तो वहाँ जनरली ये पाई जाती है।
इसका यूज़ होता है। जोड़े के दो कॉलम को जोड़ने वाली, ये तो एक था जहाँ एक तरफ हमको रुकावट है, लेकिन कई जगह दो तरफ भी रुकावट हो सकती है, तीन तरफ भी हो सकती है। उसको ध्यान में रखते हुए दूसरा भी डिज़ाइन हम कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं, ये तो आपका रेक्टेंगुलर था, उसको हम कहेंगे दूसरा डिज़ाइन का है पेज होने का। कभी कभी मिक्सअप हो जाता है, बहुत स्केचेस वगैरह हैं, और ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे। जैसे देखिए, यह आपकी ट्रेपेजियम टाइप, इसकी दोनों साइडें छोटी बड़ी और उधर से भी बराबर दोनों, इसको हम दूसरी तरह से डिज़ाइन करते हैं। टेपर्ड कंबाइंड पुटिंग एंड both sides are restricted, यही चीज़ है। इसमें भी प्रोसीजर वही है, फार्मूला वही है, सोच वही है, सेम क्राइटेरिया वर्क्स हियर बट इन डिफरेंट मोड। वो मोड ही मेन चीज़ है, वो डिफरेंट मोड क्या है। इसमें भी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, एरिया इधर बराबर होना चाहिए, because it is tapered. There's many equations applicable there. We constitute that equation, find dimensions and calculations that this area and the left hand area of that axis and right hand area of that axis must be equal, and load of both columns must be at same point. वो ensure करना है इसमें। If we can ensure that, it's fine, no problem. If we cannot ensure that, then we will find problem. और ये बहुत इंपॉर्टेंट फुटिंग्स मैंने आपको बताई हैं। कंबाइंड फुटिंग रेक्टेंगुलर, कंबाइंड फुटिंग ट्रेपेजॉइडल, एंड दिस इज रियली ए डेथ शेयरिंग एक्सरसाइज। इफ इट फेल्स, if it doesn't fail, it's fine, it's very good. Remember, do not play with structure. होता क्या है, लोग ऐसे ही खड़ा कर देते हैं, ऐसे ही, कुछ पता नहीं उनको, लेकिन खड़ा कर देते हैं फिजिकली, और ये नहीं समझेगा बिल्डिंग गिर जाएगी। ऐसा नहीं गिरेगी बिल्डिंग कह के नहीं गिरती, बता के नहीं गिरती, गिर जाती है। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे कि हमको ये सारे लोड को लाइन में लगाना है, ठीक करना है, और यही तो इंजीनियरिंग है। किस तरह लोडों को सही करा जाए, ज़्यादा लोड ना आ जाए, यही इंजीनियरिंग का पार्ट है। कैसे इसका मुकाबला करें। और फिर दूसरे मेथड जैसे मैंने पहले बताए, ये तो भाई आपके अलग से फुटिंग, इंडिपेंडेंट फुटिंग हुई, इसके बाद कंबाइंड फुटिंग हुई, और हम सबको कनेक्ट कर सकते हैं। हम सबको कनेक्ट कर दें फाउंडेशन को। एक तो मेथड ही है कि हम पूरे के पूरे कॉलम जितने भी हैं, जितने से कॉलम यहाँ मैंने दिखाए हैं, जितने भी ये कॉलम है ये वाले या दूसरे, ये कॉलम को भी दिखाए हैं। एक यहाँ मैंने जिस तरह से गठित किया है, इनको जिस तरह से जोड़ा है, और यहाँ इसकी पूरी रफ डाल दीजिए नीचे, जगह ही मत छोड़िए खाली। आप सब कॉलम को एक कंक्रीट से घेर लीजिए, और शर्ट लगा के सरिया लगाइए, और उसको बांध दीजिए, कंक्रीट कर दीजिए। सो सिंपल इट इज। उसको हम क्या कहते हैं, उसको राफ्ट कहते हैं, राफ्ट फाउंडेशन। मोटी मोटी सी स्लैब सारे में, पूरे एरिया में, जहाँ जहाँ कॉलम, और वो रजिस्ट करेगी उसको। पर वो ज़रा थोड़ी महंगी होती है, लेकिन बात महंगी सस्ते की नहीं है, कारगर क्या है दिखना है। इफ आई कैन डू दैट फाइन, आई कैन अडॉप्ट फॉर separate footing or independent footing. I can adopt for combined footing partly and combine or other footings instantly. Okay, I give one footing to these and these two columns of this footing, or I opt for technical design. If I am successful, I am not expecting those people to service me, but better I can leave that place. I can think of something else. So something else is that you have to think for raft. If you don't have that much knowledge about that area, you will get knowledge during excavation. Understand, see, excavation of this building goes around 5 meters, and the further cannot go. That sort of thing. Now we will go to whole area, rough footing, how it works. There's no specific target for that. There's no specifications. Only specification is that you have to understand behavior of the building that's going to perform.
during performance, how it behaves, that we have to understand. That's very important point here, which you generally neglect. Let me just drop of water for my thirst. And I know there are no many people, no problem. I don't mind that there are no many people. Yet, if you are interested, they can see later on. Otherwise, it's up to them. Nobody can force someone. I am using warm water, hot water, because this is time to drink hot boiled wine. Hot water is better in this corona atmosphere for your safety. So better, I suppose, I advise you to drink hot water, to eat hot food, to take bath in hot, and to move on roof in sun, have some sun bath better. Sit down for half an hour, 1 hour in your heat of 35 degrees or 40 degrees and enjoy sunlight. It's better for you. Well, it is just a suggestion, but I'm continuing a foundation. I I like collection of columns, which is very different. I showed to you, I'll again show you what I did actually. I'll show you here what actually I did for the building, so that you may not say that I'm just speaking without any experience. Experience is of course important, that's right. I gave some details here. I try to show you, which is because you must experience speaks, and it doesn't that only theory speaks. Theory I keep apart. Theory is my basis, but experience is lead base. That is a basis where you can understand facts, not simply statements. Because engineers do not believe in statements, we believe in facts. And fact is that we produce product on site, and that product is used by you people. Actually, there are so many photos, I just take some time to bring them forth, and I'm trying to do that. But this is going to surprise someone. Just now I saw that, I missed that somewhere. Well, the show me somewhere. Cannot go back. Yeah, I got it. I'll try to show you actually this one. Yeah, let's see. Yes, yeah, I got it. Yes. Wait a minute. It's actually very small. It's difficult to show. Maybe you're not able to see it clearly. I mean, it's little not very clear. If you see this one, maybe it's not clear. I'm just trying to find out where that foundation is. See that? This blowing a problem is. Well, very small it is, so but maybe you will not see that. What to do with
this. I don't have another time. I don't have another camera to show you another video because I am using my laptop camera. And once I use one camera, I cannot use that camera. Well, I'll show you here. This is in fact that foundation. This one I'm showing is, this foundation. Oh yeah. You can see this beam foundation. You can see here. This foundation, this one. This is column and this is foundation here. This is continuous. This section is continuous. This is vertical portion is beam and a small portion below is for earthquake forces. This is continuation, and I'll show you different sketch for this. Let us say this is sketch. Yes, exactly. This is that sketch. You can see in this sketch, there are columns shown in a small square, and between two columns there are 4 lines, 2 for beams and 2 for bottom portion. These are these. And this continues to connect all columns. This continues to connect all columns. These all beams are connected. These beams are connecting columns, and from these beams load is transferred to soil below, as it's shown here. Big one and vertical one. This is that. If you do like this, you will reduce risks of collapse, risks of settlement, and it shall be better to respond to earthquake, to respond to seismic forces. This is what I'm talking about. You can once again see this, and let me just hold on this man just. Okay, and I'm just trying to show you all this. These, again I'm telling, these small squares are columns coming out from beam top. This beam connecting beam top. No, and beam is continuous, connecting all columns on that level. This beam is foundation beam, which is having 2 sections. One is this small portion for earthquake, and this is structural beam, thin one, and then there's column here, column above. This is very important point to understand. सबको मिला दो कॉलम को बीम से, और वो बीम में शक्ति है कि अर्थक्वेक की फोर्स भी ले ले, स्ट्रक्चर की फोर्स भी ले ले. ये बहुत अच्छा डिज़ाइन कहलाता है. इनके हिसाब से, इन चीज़ों के हिसाब से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, शायद आपको समझ आए. मैं समझता हूँ आप, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. ज्वाइन कर दो सबको एक साथ, और उनको देखो लोड इधर और उधर जो सेंटर पॉइंट है इक्वल है. वो सेंटर पॉइंट एरिया का है और लोड का है. दोनों एक लाइन में अगर हैं, टोटल लोड और एरिया का लोड एक पॉइंट पे है, इससे अच्छा सेफ मोड नहीं हो सकता. और एक यहाँ है या उधर है पॉइंट दूसरा, मान लीजिए बिल्डिंग का लोड ही सेंटर में नहीं आ रहा है और एरिया का सेंटर में है, तो जो दोनों का डिस्टेंस होता है, मान लीजिए 1 मीटर का फ़र्क आ गया, 50 सेंटीमीटर का फ़र्क आ गया, आधा मीटर का, जो एरिया का पॉइंट है सेंटर का और जो लोड का पॉइंट है,
उसको हम कहते हैं एक्सेंट्रिक डिज़ाइन। आपस में मिल नहीं रहे हैं। जैसे खपती कहते हैं एक्सेंट्रिक आदमी को, खपती आदमी है, सनकी आदमी है। यो डिज़ाइन भी सनकी है। जहाँ लोड आ रहा है वो उसी पॉइंट पे होना चाहिए जो उस क्षेत्र का पॉइंट हो, सेंटर का, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है किसी वजह से, तो वहाँ एक और भी आपको फोर्स ऐड करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं तोड़ देने वाली। उसे तोड़ना चाहता है वो पॉइंट, बिल्डिंग को टॉर्शन कहते हैं उसको इंग्लिश में। मैं तोड़ तो समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, तोड़ेगा नहीं वो, लेकिन तनाव जरूर उसमें एडिशनल दे देगा। जिसके लिए हमने डिज़ाइन किया है वो फोर्स तो आएगी ही आएगी, उसके अलावा और भी फोर्सेस आ जाएंगी जिसकी वहाँ ज़रूरत नहीं है। उस फोर्सेस की वहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आएगी। उस चीज़ को हमको बचाना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उस पॉइंट को समझना चाहिए। अगर हम उसको हैंडल नहीं कर सकते तो वो बिल्डिंग डिफेक्टिव कहलाएगी। कोशिश करते हैं डिज़ाइन में कि वो जितना कम उसको करें उतना ही अच्छा बिल्डिंग की फाउंडेशन है। जैसे हम चलते हैं, खड़े होते हैं पैर पे, अगर हमारे दोनों पैर साथ साथ हैं, पंजे साथ साथ हैं, और हम सीधे सावधान पोजीशन में खड़े हैं, कोई झुकाव नहीं, कोई इधर नहीं, कोई उधर नहीं, और मेरा पैर सीधा है, आपको लगेगा टेढ़ा पैर करके आप कहीं खड़े हो जाएं। आपको थोड़ी फोर्स लगेगा नहीं कि बिल्डिंग में ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है मेरे शरीर में। आई एम फीलिंग लिटिल डिफिकल्ट, आई एम नॉट फीलिंग ईजी, आई एम बैड कंफर्ट। वही है बिल्डिंग में। आपने बिल्डिंग के कंफर्ट को गिरा दिया। उस कंफर्ट को कंफर्ट रहने दो, उसके लिए सोचना पड़ता है। आप नहीं सोच पाएंगे, या सोच भी पाएंगे क्योंकि आप शायद कैलकुलेशन नहीं जानते। वो कौन जानता है आप समझ लीजिए, वो इंजीनियर ही जानता है। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, छोटा नहीं होता। इमेजिनेशन होती है इसमें। खड़े हैं बिल्डिंग में, कहाँ आ रहा है, गिनो कहाँ आ रहा है, हिसाब लगाओ। हिसाब लगाना पड़ता है, कहने से नहीं कि मैंने कह दिया यहाँ आ गया तो आ गया, नहीं। उसकी कैलकुलेशन होती है। कंक्रीट की प्रॉपर्टी देखनी है, स्टील की प्रॉपर्टी देखनी है, उस एरिया की प्रॉपर्टी देखनी है, उस साइज को देखना है, कॉलम के कितने डिस्टेंस पे कहाँ से कौन है, वर्टिकलिटी देखनी पड़ती है, कौन सी स्लैब कहाँ है, बीम कहाँ है, वो कितना इफेक्ट करेगी इस पर, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तब जाके कहीं कुछ समझ आता है कि ये पॉइंट तो इतने मीटर दूर आ रहा है इससे, इसको हम कैसे कम करें। अगर कम नहीं कर सकते तो इसको हम कैसे टैकल करें, इसका कैसे हम भुगताएं कि हमारी बिल्डिंग पे इफेक्ट ना हो, हमारी बिल्डिंग ऐसे हो जाए, ऐसे ना हो जाए, या ऐसे ना हो जाए, या आधी तरफ से नीचे ना हो जाए। क्योंकि कंक्रीट एक फ्लैक्सिबल मटेरियल है। कंक्रीट ऐसा मटेरियल जो हल्का सा मुड़ भी सकता है, स्टील तो मुड़ती ही है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दिमाग का दरवाज़ा खोलना पड़ता है कि भाई क्या कह रहे हैं ये। एक बार नहीं समझ आता, दोबारा करना पड़ता है, सेकंड टाइम, इस बार थर्ड टाइम करना पड़ता है। इसको तो ट्रायल एंड एरर। सॉफ्टवेयर में भी करेंगे तो ऐसा ही होगा, ट्रायल एंड एरर। मिनिमाइज रिस्क। हियर वी से our duty is to try and see how can we minimize that risk of torsion, because torsion can pull one side down and push one side up. It can do that, and that is not good consideration. This is what I am telling you. खेल नहीं है क्रिकेट का ये। मैं बात ये नहीं कर रहा कितना पैसा लेगा कोई नहीं लेगा, बिल्डिंग सही होनी चाहिए। और फिर मिट्टी का बात, मिट्टी क्या चीज़ है जो मैंने पहले भी बताया। तो फाउंडेशंस का तो ये है, इस तरह की फाउंडेशन होती हैं, और मिट्टी के हिसाब से हमें डिज़ाइन करनी पड़ती है कि हमारी सॉइल क्या कह रही है। मेरी मिट्टी जिसको मैं रख रहा हूँ, अपना मकान जिसको बना रहा हूँ, जिसको मैं अपनी जन्मभूमि या मातृभूमि या कुछ भी कहता हूँ, वो तो एक ख्याल है मातृभूमि का, है तो मिट्टी। मैं उस पर बैठूंगा, मेरी बिल्डिंग बैठेगी। तो आप सोचिए, आप कहीं बैठते हैं, कहीं जाके चलते चलते घर में कहीं, और आप किसी सॉफ्ट चीज़ पे बैठ जाएंगे तो क्या होगा, वो सॉफ्ट चीज़ पिचक जाएगी। जैसे आप कहीं चल रहे हैं, रास्ते में खाली डब्बा कोई पड़ा है गत्ते का,
कोई सामान डाला, फेंक दिया और आपका पैर गलती से उस पर पड़ गया, तो क्या होता है? गत्ता पिचक जाता है। पिचकता है कि नहीं पिचकता है? हाँ, पत्थर होगा तो नहीं पिचेगा, आपकी टांग से कहीं इधर उधर हो जाएगा या आपकी टांग को चोट लग जाएगी। यही डिज़ाइन है, मुझे अपने टांग को चोट से, पत्थर की से बचाना है और बिल्डिंग को उस पंक्चर होने से बचाना है जो गत्ते को, बक्से को पंक्चर कर रही है मेरी टांग। ये बात सिर्फ समझने की है। खाली खुदाई करके पाउच कह देना जी जितने नीचे जाएंगे उतनी बिल्डिंग ऊपर होगी, वो गलत ख्याल है। ऐसा नहीं है कि जितना नीचे जाएं उतना ऊपर बनेगी बिल्डिंग, ऐसा नहीं होता। नीचे ऊपर जाने से नहीं होता। डिज़ाइन में वो एक ख्याल है समझाने का कि ये कह सकते हैं जितने नीचे जाकर उसकी स्टडी करेंगे, सोच कर स्टडी करेंगे, उसके हिसाब से वहाँ खाना दे सकता है कोई, या जो भी हम खाएं वो मिल सकता है, थोड़ा महंगा इससे। कल परसों में बड़ा सुना बॉस ने उसकी, बस खर्चे करे जाओ, सोचो मत कुछ। सही चीज़ के लिए खर्चा करोगे कि गलत चीज़ के लिए करोगे? गलत चीज़ के लिए तो नहीं कर सकते आप, सही के लिए करोगे तो करो, सही के लिए करो। अगर if in case you are not finding any solution on all these foundations, then we have to resort to final, that's piling. अगर हमें नहीं मिलता, सब गंद मिलती है, नीचे कच्चा, सब कुछ कच्चा मिल रहा है, तो भी हमको पहुंचना वहाँ पड़ेगा जहाँ पक्का होगा। और पक्के के पहुँचने के लिए ज़्यादा डेप्थ भी जाना पड़ता है। पाइल डाली जाती है, पतले पतले सिलेंडर लंबे लंबे वो डाले जाते हैं, डाले गए जाते हैं। पहले डाला करते थे, लेकिन अब तो वहाँ कास्ट किया जाता है पाइल्स को। पाइल्स कास्ट करना भी आसान नहीं है, उसको भी देखना पड़ेगा, बल्कि ज़्यादा देखना पड़ेगा। कोई हम नीचे जा रहे हैं 10 मीटर पर रह रहे बिल्डिंग को, या 10 मीटर नीचे या 15 मीटर नीचे पाइलों को लेके जा रहे हैं, 20 मीटर लेके जा रहे हैं, 30 मीटर लेके जा रहे हैं। In that case, we have to keep in our consideration that what type of soil is there. We have to, means that pile and must rest on a strong base. And where is that a strong base? We have to use help of services, laboratory services. That help shall help us. That's only important point. If you understand that point, we can do it, but that's also a complicated exercise, very complicated exercise. So you say single foundation, isolated foundation, or combined foundation, or wrapped foundation, or connections in beams, etc., columns, and finally we have to decide what is our final answer. There are, as I said, in your service sector, there are so many news which are of course not trustworthy, but we should know about that. खाली ये लाइन लगाने से नहीं काम चलेगा, जब समझाने के लिए लाइन लगा ली है, उसको समझना जरूरी है। मिट्टी फाउंडेशन की बड़ी खतरनाक होती है, बहुत डेंजरस होती है, समझ नहीं आती आराम से। मिट्टी समझ नहीं आती, पत्थर समझ आ जाता है, और पत्थर भी कई बार समझ नहीं आता जब क्रैक्स होते हैं, उसमें कोई भरोसा नहीं कर सकता उस पर। हम कहते हैं फिशर्स आ गई, मुड़ गया अंदर से, फॉल्ट्स आ गए इसमें। कोई फॉल्ट्स बोलता है, कभी हम फिशर्स बोलते हैं। कुछ भी सही, कुछ तो है जो हमें समझना होगा, और हम समझ नहीं पाएंगे तो गलती तो करेंगे ही पक्का। आपने जितना भी मेटेरियल लगाया हो बेकार जाएगा, कोई फंक्शन नहीं है उसका। अगर आप आँख मीच के उसको लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, यार लगा दो बहुत हो जाएगा, बस हिसाब से लगाओ, ठीक है। उसको नाप के, तोल के, क्वांटिटी निकाल के लगाओ, और पहले इसको कैलकुलेट तो कर लो कि आपने लगाना क्या है। वो स्टील डिज़ाइन बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। लेकिन जो है सही मानना चाहिए उसको, वो सही भी है। मुश्किल तो है लेकिन सही भी है, और अगर सही है तो उसकी इज्जत देनी चाहिए। वही हम कर रहे हैं।
पाइल का मैं ये नहीं कह रहा कि पाइल ही करेंगे हम, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पाइल करनी है। अगर आपको मिट्टी सही पहले मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं इसकी अच्छी बेरिंग कैपेसिटी का मतलब वो दबाव और तनाव सह सकती है, वहाँ पे हमारी फाउंडेशन रह सकती है, तो वहीं रखनी चाहिए, कोई आवश्यकता नीचे जाए। लेकिन डर तब होता है जब नीचे पानी होता है। मिट्टी में पानी मिट्टी खराब कर देता है। सॉइल contains water, this means weak soil. Water to some extent is fine, but it's having excess water, turbulent water, we have to take care of that. That's very important. क्योंकि पानी मिट्टी की शक्ति को पानी कर देगा, आप याद रखिएगा। जो मिट्टी में शक्ति है, जिस पावर से आपकी बिल्डिंग का लोड नीचे जाना है, उसे मिट्टी का सत्यानाश कर देगा पानी। कभी ऊपर आएगा उठ के, कभी नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, वो मिट्टी को बर्बाद ही कर देगा। और आप उसमें बिल्डिंग बना रहे हैं, सीख लीजिए। अब आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बर्बाद है, आप समझ नहीं रहे इस बात को, और वो चीज़ आपको समझनी चाहिए। क्या है भाई, कौन बंद कर रहा है ये, देखने को चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड that we have to take care of building on such a foundation which is going to be very weak on that weak soil, and that weak soil is not recommended for a good foundation. That point we must understand. If we don't understand that foundation, that mechanism, then we will spoil our building. Who is this? Hey mister, who are you? Who are you, mister? Come on, show your face or get lost from here, okay? You stupid guys, wasting my time. Nonsense. सेंस ही नहीं है, खोद ही सब सेंस, idiots. I don't know why these people are coming and unnecessarily destroying others' times. Useless people. They don't understand, only enjoying their life. Enjoy, why are coming to me? Anyhow, what I was saying is, soil is very important factor. Don't take it easy. If soil is not good, then building is not good. It's very important factor. Soil is weakened by water. Soil is weakened by many other impurities. It is weakened by organic materials. It is weakened by many other points which we cannot understand directly, that is analyzed properly. There are various minerals which can also spoil it, and which can also make it better. Both ways. Spoiling chances are more. Example, clay, chickeny mitti, black cotton soil, which contains very dangerous minerals like Mount Morillonite, kaolonite, and others like that, which is very technical word, and it is mineral. This is very dangerous. In connection with water content, this soils वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, मोटा कर देते हैं पानी आने से, और वॉल्यूम बढ़ जाता है, निकलता नहीं पानी. Water retains there because of porous nature of clay. This is not permeable soil. This stops the movement of water within soil particles, and you feel you don't understand anything there. And when this dries out, soil shrinks. You must have seen certain polygonal cracks in some desert area or dry area. Continuation of that network of polygonal cracks, that is because of shrinkage of clay soil, drying out of water. That is very complicated phenomenon, and we engineers take that into consideration, because building can be affected by that. If by chance we found building on clay, it can cheat any time in future. There is no direct time we can fix, because water movement is there. Maybe there is a sandy soil below, for example, below clay there is a sand layer, or there is some other layer, granular layer, which can allow water to move into porous soil. So that water will try to swell that, and your building shall not allow that. This means structure shall be ruptured. There is a structure in every soil. That atomic structure shall be, you can say, ruptured one way, and it will affect certainly building one way or other way. We cannot predict that. There is mobility of water in soil.
mobility of water means soil water mobility. Soil water mobility is very different. I put this off this lady because this is unnecessarily disturbing. Soil water mobility is very dangerous. No one can predict that. No one. There are so many catalogs, so many data sheets, so many notes on that. But no one can guarantee anything because we don't understand soil health. Even material testing laboratory, they research on that, they investigate your soil, but they cannot predict anything because of various contents of particles of soil, finer particles, very fine particles, coarse particles, and movement of water through that. If that allows permeability of water frequently, openly, or it doesn't allow movement of water, it depends upon that. If there's a movement, this means this water flow can take those particles with it. It can take those particles from one location to another location in defined time or in some time that we can calculate depending upon coefficient of permeability, or if we have certain parameters, defined parameters, tested parameters. Otherwise we cannot predict anything. It may move, say, to other building. If it is here today, maybe after 10 years this particle reaches to some other building and leaves a void here, pores here, and created pores, or material comes here and deposits here with impurities. So water mobility is very dangerous. It is not easy to understand. No one can predict it. Therefore we cannot with decision say this is right or this is wrong. So sometimes we assume many factors, and this assumption solves this problem. We just take into our consideration, we are giving factor of safety, and adopting that. There are many factors of safeties, but whatever report comes from material testing laboratory, which is considered expert on soil investigation, we don't have here, but these are there available. They research on soil, they take samples, they also conduct site tests. Many types of tests are there. These tests tell us what type of soil is there, and that's why it's too easy. You may have to use some other method of foundation, but without knowing what type of soil is there, you cannot do anything. Sometimes water table is there and sand also is there. It will create a problem. Sometimes clay is there and water table is down, but it can come up. There are so many ways water can meet, and water means reduction of the strength of soil. So simple. I consider soil as a part of foundation, though it's not. But in consideration, it is a must. Just like in machine foundation, we take a part of soil with machine foundation, approximately up to 25% of weight of foundation. Generally, it's not mandatory. We just take that into consideration that foundation, structural foundation and soil act together, and they actually act. But because it's big building, it's not simple foundation, we ignore that. We just use soil for purpose of transmission of loads from building to foundation and foundation to soil, and then disappear. That is real purpose. If real design it is. Load cannot be contained in elements. It cannot be contained. Ultimate destination is soil strata. So do not take it lightly. It's not light, it's heavy. Foundation is important because foundation rests on soil, it doesn't hang. That point समझ लीजिए आप. पब्लिक को कह रहा हूँ, इंजीनियर्स को नहीं कह रहा हूँ. पब्लिक की समझ में बात नहीं आती आसानी से, और इसलिए अंधाधुंध काम कर दो विदाउट थिंकिंग. पब्लिक डू नॉट अंडरस्टैंड. मजाक बना के रखा है सॉइल का, फाउंडेशन का मजाक. छोटी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, खेल है बना दो. जैसे रोटी पकाते हैं, चावल पकाते हैं घर में,
जैसा खेल है, पका लो खा लो। बिल्डिंग की फाउंडेशन पकाने खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए। कल को कहेंगे मेरी बिल्डिंग हिल गई, टिल्ट हो गई, बाहर को आ गई, शिकायत आप ही करेंगे। लेकिन जब कोई बताएगा आप सुनेंगे भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 100% गारंटी ले सकता है इंजीनियर, नहीं, कोई गारंटी नहीं ले सकता। एक लिमिट तक है, उसके बाद नहीं। जिस तरह डॉक्टर कहता है आई हैव गिवन राइट प्रेस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, that is not a guarantee, that is a procedural guarantee. So we also take procedural guarantee. I cannot predict anything as a professional, no way. Yes, we can say that within this constraint this is fine, that's all. Even then it is dangerous. मस्त सुना होगा आपने, चलते चलते सड़क बैठ गई। You must have understood how this road has sunken or caved in. उसके बाद आपने सोचा नहीं, गई बैठी तो क्यों बैठी, बैठ गई, ये न्यूज़ तो आ गई, आपने मान लिया, लेकिन अपने आप तो नहीं बैठ गई, कुछ तो होगा। क्या नीचे जमीन तो खोखली नहीं है सारी नीचे तो जो बैठ गई? तो पहले भी दिखता अगर होती तो कुछ तो दिखता जब बनाई थी, इसलिए बैठ गई कि कहीं ना कहीं गलती हो गई। सड़क बैठ गई, पाइपलाइन बैठ गई और बिल्डिंग बैठ गई, बैठ गई, उठ भी गई। आई हैव सीन समथिंग, माय बेसमेंट हैज कम अपलिफ्ट हो गया। आई गेट सम इंफॉर्मेशन, पीपल व्हाट आई डू, व्हाई आस्किंग नाउ? जब तो आप सो रहे थे, अपने नशे में थे, हम कर रहे हैं अपने आप जाओ। ये जो हम कर रहे हैं होता है ना, बड़ा डेंजरस होता है। आई हैव मैनी कलीग्स इन माई लाइफ, दे आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट, वो नक्शा बनवा लेंगे आपके, प्लीज़ मेरे को जरा एक लेआउट दे दीजिए, बना के प्लान दे दीजिए, मेरा गांव में मकान है, मैं बनवा लूँ। अरे आप बनाएंगे कैसे स्ट्रक्चर? वो हमारे यहाँ एक्सपर्ट हैं, वो सब जानते हैं। इतना कॉन्फिडेंस है इलिटरेट पर। देखिए, जिन लोगों को ABCD नहीं पता, दे डोंट नो ABCD ऑफ व्हाट डिजाइन इज, एंड दे आर टाइटल बाय वर्ब एक्सपर्ट, वी कैन डू एवरीथिंग। Means they want to just give some lines, I give you some lines, setting of that area, how I have to adjust the room and stairs and bathrooms and all that, kitchen, I get it done. इतना ओवर कॉन्फिडेंस, फिर रोते हैं बाद में, रोते भी हैं। अब क्या करें, ये आप मेरे से क्यों पूछने आए? जब मैं आपको बता रहा था तो बस सर फोड़ रहा था, आप सुन नहीं लगते। दैट टाइम यू आर एक्टिंग ओवर स्मार्ट। और अब क्या रहे, ये हो गया वो गया, तो मैं क्या करूँ, मैं हेल्प नहीं आऊँ ऐसे आ गया ऐसे। अब हेल्प क्या करूँगा मैं आपकी? कुछ लोग आएंगे बालकनी, वो बालकनी थोड़ी नीचे आ गई जी, ऐसी बात करेंगे। 6 फीट बालकनी और 2 मीटर बालकनी यू हैव एक्सटेंडेड विदाउट एनी स्ट्रक्चर, एंड यू आर कमिंग नाउ इट इज कम डाउन मीन्स कॉलेप्स नहीं हुई है, सैगिंग आ रही है, उसमें डिफ्लेक्शन आ गया है। तो भाई मैं क्या करूँ? फिर उनका डिज़ाइन एक और आ जाता है, नहीं कोई करता ना, वो नीचे से एक और कॉलम खड़ा कर देते हैं, गोल सा बना के डिज़ाइनदार, एक डेकोरेटिव टाइप कॉलम बना देंगे, हमने इसको सपोर्ट लगा दी। और एग्जिस्टिंग स्लैब में भी ऐसे कर देते हैं एक्सपर्ट मिशंस, या नीचे लगा दो, एक ऊपर स्टील का लगा दो एंगल या आई सेक्शन, उस पर सब, हाँ 5-7 साल तो चल जाएगा। ये ऐसे डिज़ाइनर्स हैं हमारे यहाँ, अपने सेल्फ अपॉइंटेड डिज़ाइनर्स, सब डिज़ाइन कर देते हैं, नीचे से ऊपर तक सब आता है। बेसमेंट का डिज़ाइन कर देते हैं, ईंटें लगा रहे हैं बेसमेंट में, वॉल्स में, आप क्या कहेंगे हमको? किसको पता ही कुछ नहीं है क्या रिटेंशन होती है, क्या फोर्स होती है, क्या मूवमेंट होता है, कुछ नहीं, सब जानते हैं सब कुछ। इंजीनियरिंग है ही नहीं, है ही नहीं। और बहुत से तो इंजीनियर भी नहीं समझते इंजीनियरिंग, मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स डोंट अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग। चलने दो यार, ठीक है ना, चलने दो यार, ठीक है ना, सबसे बड़ी इंजीनियरिंग है। अब मैं कहता हूँ कि लोगों को कुछ बताएंगे नहीं तो लोग समझेंगे नहीं। हमारी प्रॉब्लम यही रही है देश में, पब्लिक को कुछ पता नहीं, आवर पीपल डू नॉट नो व्हाट वी आर डूइंग। डॉक्टर का पता है, वकील का पता है, जज का पता है, पॉलिटिशियन, सबका पता है, सबके बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं जानते। और कुछ नहीं यार, कॉलम खड़े करने हो जाए, हम खड़े करने जाओ, मेरी जरूरत क्या है? ना कोई जरूरत नहीं।
कोई जरूरत नहीं है इंजीनियर की। पागल है जो पढ़ के आया है, सीख के है, वो पागल है। तो हम ज़्यादा अक्लमंद लोग, सबसे ज़्यादा रिजेक्शन जो है हमारे देश में इंजीनियर की है, किसी के नहीं है, बाकी सबकी वैल्यू है। भागेंगे डॉक्टर के पास, तकलीफ आ गई तो इस डॉक्टर के पास तो वैद्य के पास चलते हैं, वैद्य से तो हकीम के पास चलते हैं, हकीम से तो आयुर्वेदा के पास चलते हैं, होम्योपैथी का कहीं ना कहीं ढूंढते रहेंगे। और जब मकान बना होगा, पकड़ लो मेसन को, यार मेसन बना देगा, कारपेंटर बना देगा, इसको देखो, वो करते हैं, उस पर तो विश्वास है क्योंकि वो सामने काम करता दिखता है। इंजीनियर रहता नहीं सामने, उन्हें पता नहीं उसका रोल क्या है। ठीक है यार, खाया पे सरकारी में होते हैं और तो इंजीनियर होते नहीं, लोगों को तो यही नहीं पता कि होते भी हैं कुछ। आर्किटेक्ट तो सबको पता, आर्किटेक्ट यही है, यही करेगा सब कुछ। और उसने ऐसा इंप्रेशन बना दिया है कि वो मास्टर है हर चीज़ का। मैं ना किसी की क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट में बात करूँ, आर्किटेक्ट के इंटरेस्ट में बात करना मेरा ड्यूटी नहीं है। मैं आर्किटेक्ट का दलाल नहीं हूँ, मैं बात करूँगा पब्लिक के इंटरेस्ट में, क्योंकि ये चीज़ मिसिंग है, पब्लिक को सर्विस नहीं मिल रही, इसलिए बात करना जरूरी है। पब्लिक की सर्विस जानी चाहिए इंजीनियरिंग की, वो नहीं जा रही। इंस्टीट्यूशंस फेल हो चुके हैं, वो कुछ बताते नहीं पब्लिक को, उनका जो रोल है वो नहीं कर रहे, करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे। वो भी एरिस्टोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेटिक हैं वो। हर चीज हर देश में पब्लिक के लिए होती है और पब्लिक को नहीं पता, फिर किसको पता है, कौन बताएगा? हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं। इट्स माई ड्यूटी टू टेल पीपल व्हाट यू शुड हैव, व्हाट यू, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मनी, इट्स बिकॉज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। उनको पता नहीं, उनका कसूर नहीं है, उनको कौन बताएगा? जिसने आपको पैदा किया है वो यूनिवर्सिटी बताए, जिसने आपको अथॉरिटी है वो यूनिवर्सिटी, वो इंस्टीट्यूशन बताए, या फिर सरकार बताए? सरकार तो बताएगी नहीं, सरकार में तो सब तरह के लोग हैं, उनको तो पता ही कुछ नहीं, इसलिए उन्होंने इंस्टीट्यूशन तैयार किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों किए? इसीलिए किए कि एक्सपर्ट अलग रहें और जर्नलिस्ट अलग रहें। जो जर्नलिस्ट हैं, सारे सरकारी जर्नलिस्ट में आते हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, नॉर्मल काम के लिए उनको रखा गया है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो जनरल नहीं हैं, तभी तो वो प्रोफेशनल्स हैं। तो उनके बारे में कौन बताएगा? एक यही है इंजीनियर, जिसके बारे में यहाँ ही नहीं सब जगह, लेकिन वहाँ लॉस की वजह से ऐसा होता है। तो आप अरब चले आइए, वो भी यही समझते हैं सामने जो काम कर रहा है वो ही है, कंक्रीट डाल रहा है, यही इंजीनियरिंग होता है। बस कंक्रीट डालना इंजीनियरिंग है उनके लिए, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता था, ये दूर से ओ शटरिंग खड़ेगी है, सरिया डाल दिया और कंक्रीट डाल दी, और यही इंजीनियरिंग है उनके लिए। दिस इज इंजीनियरिंग फॉर देम, दे डोंट अंडरस्टैंड एल्स। उसके पीछे क्या है, पर्दे के पीछे, दे डोंट नो, दे डोंट वांट टू नो। उनको दिख गया ना, मिल गया सामने, प्रोडक्ट सामने दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, क्या कर रहा है, यही होता है बस। ये चीज को खोलना है। बड़े बड़े प्लांट बन जाते हैं, उनको पता नहीं होता। रिफाइनरी इतनी बड़ी बन गई, 10-10 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट होती है, पता नहीं लोगों को। न्यूक्लियर रिएक्टर बन जाते हैं, पता नहीं लोगों को कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, बन गए। बाहर के आगे लोग बना के ये कह देते हैं बाद में, यार इंटरनेशनल कंपनी आई थी उसने बनाया, वहाँ इंटरनेशनल कंपनी आती। इंजीनियरिंग में भी इंटरनेशनल कंपनी होगी, देखिए यहाँ की इंजीनियरिंग दूसरी है, बाहर की दूसरी, उनके हिसाब से इंटरनेशनल लोग आए थे, अंग्रेज आए थे, अंग्रेज बना के चले गए। मतलब अंग्रेज ज़्यादा जानते हैं, हम नहीं जानते, मतलब यही हो गया ना। ये एक ब्लैक पॉइंट जो लोगों के माइंड में, इसको खोलना जरूरी है, लेकिन लोग सोचते ही नहीं उस तरफ। कोई पब्लिसिटी नहीं बताने के लिए, कोई ऐड नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं, और सबसे ज़्यादा खर्चा इसी में होता है। देश का, पूरे देशों का बजट इसी में जाता है, कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में, डेवलपमेंट में 70% पैसा यही खर्च होता है। रिफाइनरी है, एयरपोर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स है, सब यही डेवलपमेंट तो है। दिख तो रहा है डेवलपमेंट है, लेकिन डॉक्टर कौन है पता नहीं। स्टेटमेंट दे देगा कोई, हाँ जी इंजीनियर का धन्यवाद और उसका धन्यवाद और उसका धन्यवाद, धन्यवाद तक तो ठीक है, वाद किधर है? वो कहीं हमने करा दिया, बस इतना है, मैंने देखो ये काम करा दिया, करने वाले का नहीं बताएगा कोई। यही तो बीमारी है पब्लिक को। वही पब्लिक गलत कर लेती है, वही पब्लिक गलत कर लेती है। पब्लिक सोचती है यार ये इंजीनियर को पैसे क्यों दें, 50 लाख में लगा रहा हूँ, 1-2 लाख इंजीनियर खा जाएगा, बचा लो 2 लाख। वो 1-2 लाख को बचाने में लगते हैं। आर्किटेक्ट 3 लाख खा जाएगा, वो दे देंगे, क्योंकि बिल्डिंग का परमिट लेना है, उसके बिना बना नहीं सकते, वहाँ मजबूरी है।
इंजीनियर की क्या मजबूरी है, क्या साइन करा देगा, कोई भी 2-4 हज़ार ले लेगा, साइन कर देगा। ये माइंड सेट ऐसा हो गया है, मतलब साइन कराना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छा मकान बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। गिर जाए तो गिर जाए। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बिलीव नहीं करेंगे, यू कांट बिलीव दैट। अरे गिरेंगे तो सबके गिरेंगे, मेरा भी गिर जाएगा। कितनी ज़बरदस्त डाइजेशन है, देखिए, सबके गिरेंगे, गिर रहे हैं, मेरा भी गिरेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी मर जाऊँगा। आई हैव सीन सच पीपल। I have seen people, a person says, I don't want zero defect building. I don't want zero defect building. What does it mean? चलने तो थोड़ा डिफेक्ट चलेगा यार, 10-15% डिफेक्ट आ गया तो क्या होता है, खड़ी तो रहेगी ना। I don't want to take any headache. Don't ask me any question. If you want help me, help me. आपके पास कोई क्लाइंट आता है, क्या पूछेंगे आप उससे, मेरी हेल्प करो, क्या हेल्प करेंगे, नक्शा उसके ऑलरेडी ही हैज ए बिल्डिंग परमिट, प्लान ले आया। प्लान तो आपको पता है कैसे होते हैं सब, खाली स्टैंप ही लगी जाती है, कोई चेक तो करता नहीं, ना गवर्नमेंट वाला चेक करता है, ना आर्किटेक्ट तो कॉपी पेस्ट में काम चलाता है। बस सेटिंग एक बार करती वहीं, तो उसके बाद सब कॉपी पेस्ट है, बस दे दिया ड्राफ्ट्समैन को, एलिवेशन बना दे, सेक्शन बना दे, FAR निकाल दे इसका और दे दे उसको, उस ले जाओ जी, ले जाओ, हो गया, परमिट दे दिया। स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं है, आ गया, उसके सब वो कहेगा जी बताओ इसका डिजाइन क्या है, ठेकेदार को बिल ले दिया उसने, ही हैज गिवन दैट कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या करेगा ठेकेदार, उसको तो पता ही नहीं क्या करना है, आ गया। अब उसे पता लगा स्ट्रक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्ट को बोलता मैं क्या करूँ, ड्राइंग नहीं मिल रही है, कहता यू पे मी मोर, आई हैव टू हायर स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आई हैव टू पे दैट पर्सन दिस मच, when eyes of this client opens, I have to pay this much more, already I have paid you this, no, you have to pay this much। oh बेचारा हो गया क्लाइंट, यार मैं तो बजट में नहीं रखा था, आई हैव नॉट दिस कंसीडर दिस पॉइंट इन बजट, आई हैव टू पे दिस मच टू ए इंजीनियर, so he thought this architect would do everything, and this is a practice of architect, in pieces they charge money, not in one go, because they understand better than engineers, they want to grab first, hold this client first, and we will cut in pieces this client, because if you say give me total money, this client shall run away। they are good business people, in fact। अब एक मेरे साथ था, एक मेरे नॉन, he came to me, this is my problem, you know me, you help me, okay I will help you। I saw that drawing, we reviewed that drawing, complete rubbish, and it was building permitted drawing, complete rubbish, even stairs were not right, there was no detailing of lift, nothing। I asked this man, I want certain details, this नहीं जी आप नहीं करना, you do it whatever you want, but I want details। he was annoyed with me, I want to see your soil, take me to site, I want to see how it is, I want to study this, I want this lift size, that size। I raised 2-3 questions, and that person wanted to do nothing। okay, give me address of that manufacturer, I will coordinate with them, I'll get information that this person was, he wanted, you do everything, don't ask me anything, why you waste my time, this contract is already working on my site, he is worried about contractor, the contract is working on site, so just immediately start without any further detailed requirement। at end, that person didn't agree with me, but he agreed with that person who was working on site। convincing power of those people is very great। you talk of soil, you talk of some coordination, these people cannot understand anything। what you do in that case, he said to me, this person says if I just put sand below foundation, it shall help to solve seismic action। see what formula is going on in our country, just a little layer of sand, fine sand, shall solve your seismic problem। this is our country, how they explain to people, means don't ask any question, don't, I'll put some sand below and that's okay, that's fine। if you say, if you even investigate through laboratory or someone, they shall also give same report as I am giving you। so what do you say? and builders, my God, on top of that, they know everything,
builders and promoters, they are expert engineers. They can change theories and principles and formula, everything. When engineers are only puppet engineers, not civil engineers. If you act puppet, you are fine. Of course, you have to live, you have to eat, you have to make money, or you fail yourself, that's all. So people adjust with builders and promoters, so they have no other choice. And I'm not criticizing that, because everybody wants to earn money. Money earning is important, or profession is important. There is a disparity, there is no integrity. Where we fail, this is character of this country. That's what I'm talking of, quality management. There is no quality management, only in papers, nowhere else. That is important one. We must take this point into our considerations, and that point we are missing. So this is what I'm talking, not because I am happy to talk. I have seen in my experience that we are not producing good structures here because of this reason. Forget ordinary work, forget private work. Go and see metro work. Two types of works are there, pre-stressed work and cast in situ work. You compare quality of both. If you are an engineer, you can compare. If you are not, okay, fine. You can see closely all those. Pre-stress is factory control. You shall not find any specification defect on that. But if you go and see cast in situ work, if you inspect closely, you will not say that this is standard work, even if it is metro. You go and see crash barriers, you will find honeycombing on them. You will finding voids on them. You will find so many. I tried many times to see this is metro work and this is this international. Okay, we respect that. I don't say no, but still defects appear there and nobody cares. Nobody tried to repair them correctly. Just again say mortar. Same principle of mortar. They think mortar can do same work as concrete does. This is a special phenomenon in our people. Put some mortar. That's it. Or cover this with some Haitian bags until mortar is fixed. So that nobody can see that. Hide it, no problem. What I am saying, it may be small work, it may be big work, international company does it or your company, doesn't make a difference until engineers do correct job. You think there are no engineers in metro? I have seen railing, handrails on stairs, or when you ride the stairs and handrails, these are not properly dimensioned well. Wall line is it and there's no parallel. It's a different day. Is it that? Is it architecture? King there, it's king. On handrail you cannot link up. It's public place. Eyes can tell where is mistake. But no, their eyes are closed. When they walk, they don't see that. They only see how many meters it is. That's all. Measurement purpose. I am surprised. You cannot forget structure. You can't even see what is seen by eyes. How you are putting railing pipe, stainless steel pipe. You can't feel equally from that line, equal distance. Skink in somewhere and seen it's not parallel to that one. So, and that is forever. Everybody will see that. People don't point, no, but that's different. But if I go for that purpose, I'll see that. This is equality. You cannot do good finishing on concrete. You cannot apply vibrator properly. Who will look after that? You have to look after that. Your supervisor will look after that. Your crew has to look after that. I know you did a lot of work on that. I don't say people they don't do hard work. People do hard work, of course. We appreciate that. Hard work is there. But quality is not there. Good workmanship is not there. Go and see payments. New payments. Completely rubbish. Mason does as if it is his own
no obligation on someone, no controls, no finishes, no required roughness. It's too rough. Do you think so much roughness is better? Means you fall if you walk on that. Many times I still little protrusion on that, small protrusion, small chips is fixed and comes, and you walk there, your feet strike and you fall. Why is that? It is dangerous to quality as well as to safety. Both are endangered. People are generally, they don't walk these days, so they don't notice it. But if those who walk, I saw such defects. You cannot chip out that one at time of construction. You are so lazy. And why did you not notice it, Mr. Supervisor? You did not notice. You did not know, leave it. What I am saying is, you are spending money, you are spending time, everything. There is no saving, but you are not concentrating on that activity. You are just coming and going for visit. I have visited, you are reporting, I have visited, everything is fine. There is no third party. Even if there is third party, I think that third party is for name's sake third party. If third party cannot notice, it's no purpose of third party. It's unnecessary clause in contract. The third party shall come at frequent intervals and they are paid by client. So third party purpose is no third party there actually. If there is a third party, there should be good work. From beginning to end, there should be good control. So third party purpose is also defeated. So what not only project is defeated, everything is defeated. This is a fact of life. We do not know what are our roles in construction and in designs. Both are absent, both are deficient. They do not know what is their role. Designer thinks I have done it and take it, do it, that's it. And that person says, give me, I will do it my way. When my way comes, this becomes a highway, dangerous highway. No speed control. You drive 120 or 140 or 160, no problem. No speed limit. No question of what curve is coming, not coming, which way you have to go. Just go on driving and driving and driving. And camels come and you strike with camel. And this is what is happening. Money is not saved. Don't say money is saved. Nobody is saving money. Abusing material, abusing methods. That is my concern and must be your concern. You are an engineer. You must be concerned. Otherwise, there is no purpose to be called engineer if we want to leave everything to them. Contract is also very professional. I respect, but contractor must do that. I would not say contractor doesn't want to do that. Contractor employs some engineers and supervisors. It's their job. Contractor is not supposed to know everything. I can't blame contractor. His key personnel are responsible every time. And contractor is not supposed to keep personnel, because key personnel means you know everything. You are key. That's why you call key person. If you do not have key, if your key cannot be used to unlock or lock, what's your purpose? Why you are key personnel then? You are an ordinary person who has to follow. Key means you are leader. You are allowing entry and you are closing shop. Neither you are closing shop, nor you are allowing entry. What purpose of key it is then? Why should I call you key personnel in organization? We don't understand meanings of articles like this. I am project manager, I am general manager, I am chairman. You know your job, that is important. You are only interested in thinking how much profit, what percentage of profit this company should get and what percent of my dividend I should get. If that is an only approach, this is dangerous. You do not know there is a liability on every contract. Maybe here I am not sure, but when you do some contract, there is a warranted item, a structure is warranted, machines are warranted, mechanism is warranted if it's complete contract. So if there is a failure in 5 years or 10 years, you see what happens. If there is a failure of waterproofing system and roofing,
water pump system fails, guarantees for 10 years, say, now what shall that person do? You will simply say, remove this and change it. Okay, that person says, I'll do it. That is only for waterproofing system. It's for which you paid him. But what about polystyrene on that? What about tiling on that? What about other items on that? You have to pay for that. You cannot simply say to that specialist applicator that it's your fault. That person say, okay, I'll do it. First you remove your tiles, remove your polystyrene, remove your sealant, remove all that. I'll come and do it. This person is 1 point responsible, you are 4 point responsible. Why don't you understand that? You know what I am talking. This is a system man, this is a system content. This item is system item, waterproofing system. But waterproofing membrane is one item of that, for which you give you allot this work to applicator, specialist person. That person charges you for one item, not for all these 4 items. And then there are chillers, air handling units which rest on plinths. You have to remove them also because those are also waterproofed. If not, okay. If done, then you have to remove them also. It depends upon design. What I am saying is, it's not that easy. We take it. It's very difficult. Difficult in a sense, control difficult. Controls are not that strong as they should be. And that's where we stand. That's where we lose. I am EPC, I don't care. I have given response. But EPC, mister, you are also responsible. Ultimately, you are at fault. If there's a time question, if there's a money question, if there's a claim from other party because of mistake, my plant is held up and millions of dollars are lost. Try to understand seriousness of responsibility. Responsibility includes all responsibilities. Time lost responsibilities, damages responsibilities, your own responsibility, everything counts. And if a structure fails, you know what they used to in Abu Dhabi, but when I was there long back, after 10 years of structure, these government people or laboratory people used to go to every building and say, random they used to extract cores from concrete. Can you imagine this? When 10 years of construction is over of that structure, this engineer from laboratory or technician extract cores from concrete, building concrete, and test them in laboratory. What is strength now of hardened concrete, 10 years old? It's fine, okay, otherwise remove this building. This then comes in old building, okay, if it has to keep there, then it's old building, and only this strength is accepted on this. Otherwise, remove this and reconstruct. That is called management. They research on this. They understand what is value of structure, whether it is still same to serve us or it has lost its strength due to whatever reason, due to structural reason, deformations reason, hysteresis reason, or whatever reason it could be. They want to keep it restored, retrofitted. If it cannot be retrofitted, then completely remove it. So there were classifications. This is old building, this is new building, this is old building, this is new building. New building is expensive, old building is not that expensive. This is their management. I am not doing to do that. Because they have money, they are earning, they were earning. So they could manage that. But we have to expand our knowledge and see how we can do. We cannot leave it to luck. God shall take care of this. God shall take care of everything. Why you involve there? God, you have no right to say, God, you take care of this. You cannot ask God. God is not your assistant. God has already given you an assignment, do it. That's why you are there. Why you shift it to God again? You are there because of God, not because of your company. So it's your job. That's what I'm saying. I'm not arrogant. I'm just trying to explain.
I am trying to explain what mind says, what I think, based on my education, based on my experience. I am not very highly educated, I am ordinary engineer, a simple engineer. Experience what I have, and everybody has some experience. I learned more than what I learned in education, in experience. I respect experience more than degrees, because degrees keep a line on my mind. I am this and I am this, but experience doesn't give that power to me except knowledge. Experience tells me this mistake is possible and this correction is answer. This is lesson learned. You learn this and teach others. That lesson is more than degree. That lesson is actually doctorate of construction and doctorate of engineering, more important than PhD in engineering. Because you deal with people, you deal with and with realities. Nobody guides you there. You are your own guide, your own professor. You are not a student. You are a student as well as professor. So you learn a lot there. That is what is required, because that learning is based on your educational system, educational learning. You keep it far apart, but formulas are with you. Same formula you are using, you are applying your energy on mechanism, formation of new mechanism, formation of existing mechanism, improvement of that, and you learn many things, many actions in professional life, which is power. And that is called professionalism. Advanced learning, there is no limit. Learn it, that is nowhere available other than on sites or in experience. That is where I want to pull people, that this is your school, this is your university, Enfield. This is not statutory university, this is ever living university. You can learn everything here. There is no limit. You go to as many projects, you learn as much as possible. Volumes, documents are there, written by many people, many experts, not one experts. And that is reality. There are errors in them also. We can discover those errors and we can add our knowledge to that. That is what whole world requires. Learning. Book knowledge is not end of learning, it is the start of learning. And experience knowledge is not end also, it's also changing from time to time. Something goes back in history and then something new comes in. All these problems comes in. Many problems keep on coming and keep on going. That is where we stand for. This is where genius is required. For which engineer is named genius. Engineers. Genius person is engineer. It's not necessary you are civil engineer. Everywhere that genius can be used. This by chance name is they are engineer. Otherwise it means just do it. Finish. Just do it correctly. That is engineering. Nothing else. You think, you decide and do and check and act. That is engineering. Just to do, decide is design. Do it, application. But make mistakes, check it and correct it. Make it right and deliver it. It should be continuous in use. It's not a model. It's an application. It's for use. It should serve this purpose for which it was intended in a reliable way, where it is safe, where it is serviceable, and it continues to work, which is durable. That is what we are, and we are agents of that, we are servants of that, and this is our duty to work on that in that way. This is my objective, nothing else. And my objective is that do not just go with one point, completely form mechanism, what you have to do, complete sequence of that, just like we do on bar charts, program charts or schedule. That is also a concept, but that is planning concept, that's time concept, that's time bar chart, that's time scale. I am not talking of time scale, I am talking of quality scale, quality chart you need. There is no such chart, but system is there.
You have to, I'm not saying you bind by some system, don't bind. Everybody has their own system. Sometimes we plan on papers, but we do differently. It happens. I'm walking on site. Oh, I see. I missed that one. I should have taken. Okay, stop that and start here. We should do this more convenient for access. That's little difficult. We'll start there, here first, and here, there. If we change like that, because when we sit in office, we cannot see all obstructions from office. Then we go to location and see what is alternative for this, what is best for this, and we adopt. And there's no change, there's no problem on that. You can change it. Same thing when I have to start something. It's my duty, responsibility to ensure what I am going to start is completely clear before jumping into that location. And it takes only 1 day or half day, maximum 2-3 days if it's a big one, to see that it's the best way to do. So that it should not first of all conflict with other items, other areas. It should be freely done. Access should be clear. And if there's some other work, we can leave that other work and go to next work. So that sequence and repetition of our material is there. All that mechanism must be clear. That is where micro planning works. Macro planning is already done, but micro planning, if you write everything on bar chart, I think it should be another problem to manage that. Just like you cannot manage everything in writing, you have to manage here. Change it and do it. Result is there. Ultimately, you are getting objective delivered. That's most important. Once objective is delivered, now the questions: what was your plan and what's not your plan? That's only a record. Yes, this item was done, planning was done, so this is part payment of planning. Will this percentage of planning we payment? And nobody say why and what is there after that work is delivered. That's important. That might be important. Don't keep everything with tight rope. Quality should be tight rope. Safety should be tight rope. Safety can even stop your work if it is not properly done. Same way, quality can stop work if it's not properly done. Failure of test, failure of concrete can stop completely everything if it's not properly done. That's where we are in trouble. So, do not take this lightly. Do not exclusively think that a structural engineer means designer. No. Design is one part, but site is real structural engineer, where this design is going to be implemented. That's more important for everybody. If I cannot work correctly, this design is not done. That's only in papers. So site person, executive person can spoil your work. Remember, I am also one of them. I can spoil your work if I am foolish. And everybody is foolish in beginning. I was also foolish sometime. I could not understand anything. I learned day by day, by mistakes, by errors, by ignorance. Everybody learns. It's life. I cannot say that some person makes mistake. Yes, intentional mistake is not accepted. Ignorance is okay. Absence of information is acceptable. That okay, you were not informed, you made this mistake, you did not know, you required coordination because you are too young, you are baby. So we will teach you. I was also baby, many people taught me. So it's learning. So I am trying to pass my experience to other one, if they can learn. By learning only, but learning is also important. I cannot say what I do is right. Other person has to say. If that person says okay, fine, it's okay, then I will tell someone your work is right or not right. It is a chain. You cannot simply come on top and you are head and you do everything. You cannot do anything until you know it. That is what say we have to be open-ended both ways. I don't know everything and others also don't know everything. Interaction is therefore a must. And public is involved. That's more important. Public should know what we are doing.
by way of videos, by way of site, something they, or by way of dissemination for what's happening here. Only information is reaching engineers, and they hardly, rarely read that. How many journals you read, which institutions are showing? I don't think 2 or 3% people read that, except professors who are required to issue certain notes for purpose of promotion. Otherwise, I am not attentive to them because I know that's not useful in direct life. They are going into technicalities only, theories only, real site work they are not taking care of. That information to site person is required. How to improve your work, how to improve your quality, how to improve your planning, how to make it better. This contribution is not coming from institutions which they are bound to do it, but now it's not coming in. So who shall do it then? Persons like me, like you would do it. By this way, gradually, slowly, trying to tell people. I know this type of talks are not very much responded, not very much received, because subject is like that. People want entertainment. If I sing a song and show you dance, people shall like it. But if I talk seriously, people don't like it, because seriousness is not welcomed by everybody. Enjoy is welcomed by everybody. If you show something like film stars, they shall come to see you. Otherwise, it's boring. He's talking something which you do not understand. Why should I listen to this? Okay, that's different. But somebody may listen, somebody may not listen. That's not my outlook. Because I cannot listen in those places. If people accept, people take interest, fine. But I have to do my duty. Maybe somebody else listens to it. No problem. But something is there. I also listen to other videos. I also view them. If I think, yeah, it's just informative, I use them. If just entertaining, I come and leave it and go away. So it's for everybody. But question is, if somebody does something, it's better. Maybe some worker listens, maybe some labor listens, maybe some foreman views your video. That foreman can benefit. Ultimately, someone will understand something if it's not 100%. That way world moves. You cannot change world in one day. And I don't expect that all my friends will know, they will not like it. I know. No problem. I am not related to my friend directly. It's just the imaginary friendship, virtual friendship. But I just want to share with anyone who wants to share it. Okay, no problem. It's not news channel, it's not dance channel, it is serious talk. And my talks are always been like this. Whatever subject is covered, it is serious, because only serious people can think, no one else can think. If you are not serious, you cannot think. If you are amusing person, you want to entertain life, enjoy life, you cannot think. You will think only to that level. So that is only criteria I am trying to spend some time on. Though I have a lot of time, I'm not having that much occupation because of age and because of so many reasons. So I try to use my energy this way. If I can do something, or anybody involved, means why only in this country? For everyone. People sometimes speak to me, write to me. They are interested. So let them. That's why I say, I wrote some books, say in 96, one more book, small book of site work was published. People did not take interest. Our country will never take interest in such issues. But those who need such information, they use that. Okay, it's up to them. Sometime one student, PhD doing a student, sent to me, I don't have any topic, this and that. Though I'm not PhD, but I had some information by my work. I sent, okay, you take this topic and I can support you in this. One of my friend from USA told me, I am not civil engineer, this person is civil engineer, you talk to that guy. So I had something, you take this subject, this topic and research on this. So I am not losing anything there. If somebody get benefit of that, okay, what's wrong with that? It's that. If somebody can add something good to this world, not only my country, the whole world, I am saying, I feel happy, because if I am our country citizen, I am
world citizen also, technically, not formally. By virtue of being on earth, I belong to world first and then to this country. It's not that I was born here and I belong to world. I belong to world and then belong to this country. This is fact. I'm on earth. So whoever benefits, I don't mind. Because engineering is not restricted to my country, it is for whole world. So my mind is different. We have to work for humanity, not for, we go to other countries and work there for what? We help them. Okay, they pay us, but we help them first of all. They don't have that person with them. That's why they call you. If they have plenty of engineers, they won't call you. Why shall they call you? Same thing we have. So we work. There was one time there was nobody here. We did not develop. But now we have. But we are not developing that standard as we should have. We are having engineers many more times than England has. Many more times than America has. But we are not understanding that we are power of engineering. We are power of engineering, but our power is defective. We have fuses off, we have short circuits in our system, and we are not giving that. Government people least bother. International companies least bother. Who bothers? Just do something and that's all. Do something and that's all. I am really surprised to see what's done by international companies. Here they care, but here they don't. Because they think this don't do whatever they want. No controls of anything. Forget quality. No planning. Quality is apart. Planning is not existing. Stormwater drains here in Faridabad. Whole Faridabad is for stormwater. Now rain is coming after some time because of this work is held up. Nothing is happening. And there's no use of what they did because all water shall go into those works which they did and waters become stagnant and breed, mosquitoes in that. So epidemic after epidemic and then another epidemic. Where is planning? They are not serious about that. No one is serious. No one is working. Everything is off. Previously, they patchwork here and patchwork there and patchwork here. They don't have adequate staff, adequate personnel for that. They did it. Some here, some there, some here, some there, some here, some there. Spoiling whole area, whole. Before that they did pavement, now they spoil pavement as well. They should have in sequence this work, but no. First they did pavement, then broke pavement and do water line, then do that, and now doing stormwater drain. All work they spoiled. Nobody is bothering. Smart city construction. Spoil everything and they are calling it smart city construction. Whose fault is this? This is fault of management of government and that company who is responsible for smart city development. That company is responsible. You don't know how to distribute contracts, how to award them, which sequence is there. First you are doing payment, then you are breaking payment for infrastructure. Is this planning? First you do planning, first do piping, do storm water, then go for payment. But no, whatever you want to do it. If you break it, they are breaking also in a way they don't bother. Their blood doesn't pinches them. Break it, break concrete. As concrete is flour, concrete is paper. Break it, use rock bricker. I feel sometimes what level of foolishness we have here. Really level of foolishness. Nobody has any, pain. We are damaging our country. Nobody has pain. Because such people are not there in those seats who think what is value of this work. IAS never go to site, never see what's happening. Executive engineers, as they sit in their offices, they never go. Maybe on phone they talk, what's happening, what's not, take report and send this work is done, this is being done. This is only job. Who's on ground? Subcontractor, contractor. They are managers, they sit in offices and workers are there who know nothing about that. I have not seen any engineer. They come only, they send some point for measurement time. They come to measure how many length of this box is done.
for purpose of payment. Otherwise, no. I talked to many person supervisor about design. Nobody knew anything. I talked to many person, why you are doing this, why you are doing that. I did not tell that I'm an engineer, why I was asking. I just the citizen, I just watching, I saw some difficulty in my home, and my home is there. Why you are putting this pipe? Means they do not know what they are doing. So this design depends. Here is some design, here's another design. They try to teach me nothing. Oh, this is their design and this is here design. Our design is different. So maybe there's a different design. That was response by a site supervisor, or I don't know, a site foreman or what. So I'm not saying this is fault. He doesn't know about design. How can that person answer? But I was surprised to see how they were working. It's an example only. I saw this subway, there was subway construct many years back, maybe I think 5 years, 6 years back. Go and see that. Its covers are broken. Footpath is there on that. Covers are broken, seats, retaining walls, joints are not good, surface is not good. Nobody knows. Whom you tell? You put on Facebook, nobody cares. Means why I am under stress because of this? At least do something. You are showing to public we have done this. Okay, you are taking credit. But what about this? I walk there sometimes, I don't use that subway because I don't want to fall. I just walk on that passage, that this traffic carriageway. Because sometimes I have to cross that by walking. I go somewhere, I feel somewhere some car may not hit me because I can't use that footpath. It is broken. For many years it has been broken. Nobody thinks of that. At night you can't go there. If some vehicle hits you, it's a problem, but no other way. Means I do not fall in that, to break my knees or my leg. And there is no person to care. I put photographs on my Facebook, on smart company Facebook. They removed photographs and my photographs, somebody is watching on my Facebook. So what to do with that? It's a collapsed DAD system. Do not complain about anything bad. This is law of land now. If you complain something, we won't care first of all. And if you talk too much, we will put you in jail. Probably. This is quality now. So do not interfere in others' work. Do not talk of engineering. Do not talk of quality. Do not let people want to die, let them die. He jumped, they say he jumped from scaffolding because he was not happy. They would not say it's my fault, scaffolding was not right. Oh, that person jumped, he wanted to jump. They will say that. It is happening. Just put blame on victim. Do not take responsibility. This system, our system is working in this polluted, septic environment, and everybody has become sludge. I call such people having sewage in their mind who are with this. You are only criticizing government. You are anti-national. You are just speaking for. You are Congress, they will say. You are chamcha. They are calling me chamcha because I am saying your concrete is bad. I am saying your work is bad. Then I am Congress. This is new definition for me. What to do with these people? They don't want to listen to anybody. I don't understand what's happening. I have no connection to any political party and I don't want to be. Why should I? I'm not interested with them. Why should I go to them? If I am interested, I will do my own. If I am interested, why should I depend upon them? But they think differently. You can't help it. Means don't speak about anything. What we are doing is right. What we are doing is right. I visited twice or thrice one contractor who collect this plastics and rubbish from areas because government is not collecting now. Municipality is not collecting anything. They just charge you house tax. I think they don't do after that. These people collect money from you and do service for you. I went to them, you are not collecting from my home, my kachra. They don't want to collect. What to do?
You are paying them money, even then you are correct. Oh, your kachra is only kachra. We cannot sell something out of that. This was answer. You understand? If my kachra, my rags, my rubbish dry has something for that person to take out and sell to someone else's kabar, what you call kabar, salvage material, it's fine. They get money out of that in addition to what you are paying them. This is the policy. You pay to municipality, house tax, you pay to other taxes, but you have to pay to that person also. If they don't pay, they want their expectations that I want to get out more money out of that. Yes, what a small point it is. At that level, I should get something out of this rubbish to sell. Otherwise, I don't pick up your kachra. What is this? Are we living in nation? This is Bharat, or we are living in some other country? Your kachra is not acceptable. This means that I reject your kachra. They reject my kachra. Then what I have to do? They have removed all these dustbins, or this what you call big sizes. I call them waste the bin also. They thus remove them from here. So where should you use? Then say, why you are throwing on road? Shall I eat them? What shall I do with them? This is different country, really. And I wrote many times to Commissioner of Municipality. Mail I. This is happening, what should I do? Shall I throw on road? No response from Municipal Commissioner, who is an IAS officer. What can you do? Tell me. No one is serious. What is happening, let it happen. We don't care for you. If you don't pay house tax, we'll impose penalty. If you don't pay water tax in time, we'll impose penalty. You pay house tax, you are not rewarded. You pay water tax, you are 3 times they have raised water services, water bill. No treatment. They are just pumping water from well and transferring, distributing to line. No chlorination on that, nothing on that. They should do chlorination at least, but no. They are charging only for pumping and distribution system. You charge, no problem, but provide service. No, this is what we give, that's it. Means an authoritarian attitude everywhere. We don't listen to you. Finish. What you do? Go to court. Go to court. Who will go to court for small item? Am I mad? Court? Which court? There is court. If you call this judiciary court, then I'm sorry. Court has to work in efficient time, in promptly, but no criticism of anything better. So what to do? Suicide or speak and go? You speak and keep happy that I have spoken, or you fight with someone, which is usual habit of civil engineers. This is special characteristic for public, I am telling. Civil engineers are fighters also. If they want, they can fight. If they want, they are polite. If they want, they are diplomatic. And if they want, they are labor. Simple. If I am angry, I can shout. If I am not angry, I am not shouting. This is my nature. I am born like this. That's why I am civil engineer. I told many, are you aggressive? Why are you not aggressive? They don't answer. Then you are not civil engineer. Leave it. Maybe you have a degree. Go from this side. I don't need you. If you can't work in heat, you can't fight with people, can't shout, you can't manage, don't waste time here. Why are you wasting your time here? Go and sit and design, finish. Sit and planning. You are not full civil engineer. You are part civil engineer. You don't understand civil engineering. And I have seen many people like this. They were not civil engineers, but they were doing civil engineering. And by their terms, I understand them. Sometimes companies also misuse them. Put anybody and say I'm engineers, just to fill formality. I told someone, this man is not civil engineer. No, he's civil engineer. What to do? Means
What I'm saying is, we are society of fools, sometimes I may say. We are flower society, and flower means who cannot do anything on them own, either give you good smell or bad smell. That is what is foolish society. We are society which compromise at every point for everything. So we compromise everywhere. But my purpose is different. My purpose is to let people open their eyes, awake, and think your life, your quality, your system. That is more important than criticism, and that's why I started this talk on many subjects. If somebody can listen, it's okay. It's not a competition at all. It's just something because of this medium we have, we did not have in our time. If you can use it, fine, or else no problem. And I cannot do it separately except live, because if I do separately and upload it, it takes a lot of time, energy, double work. So I decided to go direct on live. Will preparedness, of course you have to prepare, you have to spend much time in preparation. If you are going on live for half an hour, it needs information, it needs clarity. And I thought, I try on YouTube also, but YouTube is not giving that benefit as Facebook is giving. Because I can put text also. On YouTube there is a restriction on text. You cannot cross this. At least Facebook takes your text, and text is also supported because I am putting references on that. If you want this information which I am referring to, you can go to that URL. It's available there, and then you have to put first that file there. I have to put that files there first, and then come on to here, because references are available. So if somebody goes there, must be openable, must be downloadable. And unfortunately Excel files are difficult to upload directly. This causes that's something I was saying is, I'm just trying to continue this chain on various other topics and subjects. Particularly I am interested in statements, because I'm not very much interested in design in this talk, because design is not easy to be explained to everybody. Only those who are professionals can, and they know it. Why should I explain to them? They know everything much better than me. They know. I'm not expert engineer in design. I'm a layman engineer, you can say. I'm illiterate engineer in this way, that I can deal with illiterate, not with designers. Designers are very high profile people. They are experts in their field, and they are more valuable. I know design, but I'm not experienced on designs except very small designs. I'm not experienced in software of designs, not at all. So I don't intervene there, because that's not my field currently. I can calculate design, I can work on design manually or on Excels. I have no experience in designs of, on, you can say, structures by software. I never done that, because of my being busy in somewhere else. So I clearly say that if I have to design, I will design by my way, not by software way. I can customize my Excel sheet to whatever formula I need. I do that. I feel happiness there. I have been using that. For example, I have done work on Kani's theorem, or some other quantification work, or some other designs of column or beams. My own system, I do that. I'm happy with that. I am not interested in any big patent or big proprietary item of designs. No, I don't. I'm not professionals in design. I'm not used to that. Therefore, I refuse that. But if I get that, I will do ordinary way. And people accept that. I work outside, they accept my software application. If I don't, they don't mind. Oh, it's not, if it is your software style or no, they don't mind that. They want result. They don't want to argue on this, which software you use. Yes, for major designs, okay, it's acceptable. For some elementary designs or some design which requires just immediately, we can't wait for consultant or designer, then we do that. If you know formula, if your methodology, you can do that.
It doesn't matter you do everything refer to sometimes 5% variation or 2% variation is accepted because factor of safety here. It doesn't mean you have to go stick to formula information you don't have in. That's why I'm saying that's my principle. And I'll close it. Thank you, gentlemen, who is there. Engineer Surabha is welcome in here and Mr. Raj as well. Thank you, gentlemen, out there. I'll now close this. Thank you.